लाइव हुआ है? हाँ नहीं, अगर लाइव हो गया तो मैं स्टार्ट कर दूंगा. ओके, so first of all, very good morning everyone. So we are having this environment module, right, in the SRIS, and as I always keep on saying that environment and ecology as a subject is a subject which requires a very different type of approach, right? Today we are live, right, only for one reason, that this topic what we are going to cover today in the classroom, right, all of you who are in the classroom, that becomes very important for every year exam. When you look at previous year question paper, right, you'll find mapping based questions are asked, and mapping based questions are based on conservation, protected areas network, right. उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल होता है. जैसे कि पिछले साल भी अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उससे पिछले साल भी जाए 2022 में, तो वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है वेटलैंड को जोड़ते. रामसर साइट और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. Direct or indirect, you would get question in the examination there. At the same time, national park, sanctuary, biosphere reserve, right, tiger reserve, elephant reserve, they all become the part of the question. So what I have done there, पहला जो हम लोग अभी क्लासेस चल रही हैं, है ना, आज 6th क्लास है. In this week we have started this classroom program. तो एक तो ये चीज है जो मैंने एनिमल किंगडम का जो दिया था क्लासिफिकेशन पार्ट, तो मैं ये क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं सारा बैकअप कर रहा हूं मटेरियल के साथ, एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियल. दिस ऑल मटेरियल विल हेल्प यू इन द प्रीलिम्स के एग्जाम 2024 का जो प्रीलिम्स है वहां हेल्प होगा. और केवल उसकी बात नहीं है, इवन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन नॉट ओनली द 2024 एग्जाम but even the coming next year 2025 exam, again they are very very valid. That part is there. Yesterday we have already covered blue flag certificate, and now India has got 12 sites, coastal areas, beaches which have been added to blue flag certificate. Like Denmark based organization foundation for environment education, which have 33 criteria to declare blue flag certificate beach, है ना, वो चीज है. और आज सीवीड फार्मिंग मैंने बताया था. सीवीड फार्मिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. और जैसे मैं वेबसाइट खोलता हूँ, when I open the Google search and open the website, the only purpose is that when I'm opening any website, you all are like, after the class, just to see that what is the things given, the Hindu paper or Indian Express or Down to Earth magazine, तो क्या क्या चीजें दिया हुआ है, क्या उसके मेन एस्पेक्ट है ना. पीआईबी जो है, मैंने जो कल हैंड आउट दिया है वो पीआईबी बेस्ड है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में. वहां पर जो सागर परिक्रमा, राइट, वो जो एरिया था उसको मैंने यहाँ फिल्टर करके दिया है. और 5 न्यू रामसर साइट्स के बारे में बताया था. आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. विल गो इनटू सर्टेन कॉन्सेप्ट बिकॉज मैपिंग इज ऑल राइट, बट यू नीड सर्टेन बिट ऑफ कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट. देन यू कैन कनेक्ट विद द मैप एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स. 3 लेयर्स में काम करना होगा. तो यहाँ पर मैंने आज जो क्लास मैंने दिया है, ये मैप मैंने कल इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट वो 10:30 क्लास का टाइम हो चुका था. तो फिर क्या होता है कि मैप अगर मैं देता तो कल आज क्लास में आप लोग लाते नहीं भी लाते, कई बार घर में रह जाता है ना. इसलिए मैंने इसको होल्ड किया था कि लेट मी डू वन कंप्लीट क्लास ऑन दिस एंड देन यू गेट द मैप. यू ऑल हैव गॉट द प्रिंटेड मैप. सॉफ्ट कॉपी आई विल ओपन इन द ऑन द बोर्ड वेयर विल गो टू ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया. तो ये मैप को हम लोग एक करके रिव्यू करेंगे. तो अभी इस पर नहीं जाना है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैपिंग पार्ट में आएंगे. See, when you talk about biodiversity conservation, right, and again today again you will be getting a PYQ, right, that is getting ready there. Again you will have 20 questions for previous year question. You will try to see what type of questions are there. Now when you talk about biodiversity conservation, you all know that there are 2 methods. Right, the 2 methods by which we conserve, we protect species. One, in situ conservation. Let me make a flow chart here, because this will become easy for us to discuss the map. When we go to the mapping part, we'll keep this as a base. So in situ conservation and ex situ conservation. Sometimes in the examination,
you have a direct question which is in situ, which is not in situ, and then again with the map based questions they are asked there. Now in situ conservation, that is within natural habitat or species. Wherever the natural sites are there, whether it is a terrestrial, whether it is aquatic, or you take marine, if we try to protect species in their habitat, that means in the wild, that we call as a in situ, right? So you know that first level of protection, that is through declaration of sanctuaries. You are aware that sanctuary could be different type, like one is called wildlife sanctuary. Then for bird sanctuary is there. Then in terms of marine area, we have marine sanctuary. So there could be different forms of sanctuaries. Commonly you will come across wildlife sanctuary, right, or bird sanctuary. But sometimes could be marine area or marine area, like for the Gahir Matha marine sanctuary. But it could be fresh water also. Like for example, I have mentioned Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary. That's in the river Ganga. In the river Ganga itself, sanctuary has been demarcated. It could be fresh water also. But commonly what you find? Land-based. Wildlife. Now remember that when you talk about wildlife, जब भी वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो इसको याद रखना है, ये कंकरेंट लिस्ट में है, राइट, comes under concurrent list. Both center and state have powers to notify. Where they need to notify? Gazette, and they can declare there. और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है. स्टेट ऑल्सो हैज अ पावर टू डिक्लेयर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी. ये गलती कभी नहीं करना है कि सेंचुरी बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये गलत है. इवन नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. दैट्स गिवन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि पहला लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है, वी डिक्लेयर सेंचुरीज. व्हेन वी हैव टू गिव utmost protection, higher degree of protection, then the government go for national park. We'll see in the classroom what exactly they convey there. जब कोई भी ऐसी जगह पे सेंचुरी है और वहां लगता है कि थ्रेट और भी है और प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, जो स्पीसीज वहां पाए जा रहे हैं डिक्लाइन कर रहा है, तो गवर्नमेंट फिर वहां डिसीजन लेता है कि इसको नेशनल पार्क बनाया जाए. तो जब नेशनल पार्क बनता है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है. तो प्रोटेक्शन के मामले में अगर देखा जाए, इंडिया में जितने भी साइट हैं या इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है ना अंडर द लॉ नेशनल पार्क को मिलता है. यहां भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास में कोर एरिया बफर एरिया जो होता है. अब आजकल कोर वर्ड नहीं यूज होता है. यू विल कम अक्रॉस वर्ड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिटिकल हैबिटेट बोलता है, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है. दैट मीन्स इकोनॉमिक यूज ऑफ सच एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. So there national park comes. Again, the state can also declare. It's not that only central government. Central government has power. The state can also declare. Now, what I'm now bringing here, first I'm bringing from the whatever Wildlife Protection Act has the provision. मैंने क्लास में मैंने ये वर्ड को यूज भी किया है, कम्युनिटी रिजर्व, और यहां पर आता है कंजर्वेशन रिजर्व. When we look at our law, that is the Wildlife Protection Act 1972, we have these provisions. Not biosphere reserve. नहीं तो मैं biosphere reserve पहले लिखता हूँ. Biosphere reserve is also very important concept for protection, but that is not defined under our law. Our law defines national park, sanctuary, like conservation reserve, community reserve, टाइगर रिजर्व, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हम इंटरनेशनली करते हैं अंडर अ प्रोग्राम विच विल कवर इन द क्लासरूम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. यूनेस्को हैज अ प्रोग्राम कॉल्ड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. तो पहला जो है हमारे लॉ में क्या दिया, हमारे लॉ में ये 4 प्रोविजंस. अब इसी में आप ये ऐड कर सकते हो, टाइगर रिजर्व सेपरेटली हम लोग टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करते हैं, और सेपरेटली हम लोग एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर करते हैं.
We declare elephant reserve, tiger reserve and elephant reserve. Now sanctuary, national park, ये जितने भी एरियाज हैं, अब टाइगर रिजर्व के लिए एक बॉडी है एनटीसीए, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस नेम. आज हम लोग देखेंगे टाइगर का स्टेटस इन इंडिया. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, right, which has been formed under the Wildlife Protection Act. See, Wildlife Protection Act from time to time is amended. If you recall, last class we have discussed that. Even now we have amended Wildlife Protection Act. So 2006 में उस टाइम में NTCA बनाया गया. But when you talk about elephant reserve, we don't have any statutory body. जबकि भारत में है ना हाथी की संख्या बहुत है, एलिफेंट पाए जाते हैं. तो एक डिमांड है कि जब हम बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है ना, टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ हंटिंग, पोचिंग एंड प्रिवेंट एनी वाइल्ड लाइफ क्राइम अगेंस्ट टाइगर, वी हैव एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो व्हाई नॉट वी हैव फॉर एलिफेंट एज वेल. एंड यू नो दैट प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992. तो हाथियों के लिए भी हमारे है ना कंट्री में एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो कि एलिफेंट को मैनेज करे, और बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. एलिफेंट कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. व्हाई इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट? रिसेंट टाइम में एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना, हाथी और इंसान का संघर्ष अभी आजकल बढ़ रहा है ना. वाइल्ड लाइफ एरिया जो होते हैं, फॉरेस्ट एरिया, वेयर वाइल्ड एलिफेंट्स कम टू द विलेज एरियाज एंड दे अटैक ह्यूमंस, और ह्यूमंस क्या करता है, दे अटैक एलिफेंट्स. एक तरह से जंग छिड़ी हुई है ना. तो वहां भी हमें एलिफेंट मैनेजमेंट के लिए भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी चाहिए, जो फिलहाल अभी नहीं है. तो ये पॉइंट इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है कि वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर बॉडी टू डील विद एलिफेंट कंजर्वेशन. दैट मीन्स बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट डिक्लेयर एलिफेंट रिजर्व. विल सी मोर एस्पेक्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व. सो दीज ऑल प्रोविजंस आई नाउ हाईलाइट हियर comes under this one. Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972 deal with all such areas. अब यहां पर एक और बात को ध्यान रखना है, कई बार कुछ जगह पे ओवरलैप भी होता है, ये ध्यान रखना है, ओवरलैप भी रहेगा. सेम जगह पे सैंक्चुरी भी है, वहीं पर नेशनल पार्क भी है, और उसी जगह पर टाइगर रिजर्व भी है. ऐसे भी होता है. और कुछ ऐसी जगह होंगे जहां एलिफेंट रिजर्व भी होगा, एलिफेंट रिजर्व भी वहां पर हो सकता है ना, वहां पर एलिफेंट रिजर्व भी आ सकता है. मैं एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल समझ में आएगा. इन ओडिशा देयर इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस कॉल्ड सिमलीपाल, राइट, सिमलीपाल. नाउ सिमलीपाल इज अ बायोस्फीयर रिजर्व. यू सी इन द क्लासरूम, इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज मयूरभंज. So it is a biosphere reserve. There is a Simlipal sanctuary, right, national park. There is also Simlipal tiger reserve, and Simlipal is also known for elephant. See, 5 things at the one same site. एक ही जगह 5 चीजें. मैं और एग्जांपल देता हूं. बंडीपुर, ये कई बार न्यूज में आता है, बंडीपुर कर्नाटका, है ना. तो बंडीपुर इन कर्नाटका, मैसूर के पास में. इट कम्स अंडर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. Nilgiri. It is also tiger reserve of Karnataka, right? It is known for tiger, that particular landscape where tigers are found. At the same time, there is a sanctuary, Venugopala sanctuary. What is the name there? Venugopala sanctuary. Sanctuary is also there, and national park is also there. Bandipur National Park. तो ऐसे ओवरलैप होता है. मानस, you know the मानस. मानस कहाँ है? असम में. So there is Manas Wildlife Sanctuary there, Manas National Park, and Manas is also Biosphere Reserve, and Manas is also Tiger Reserve. Same जगह है, साइट वही है. जब आप remember that when you talk sanctuary, so all the provision of sanctuaries are applicable. When you talk about national park, provisions regarding national park is applicable, right? So they same area they will be managing at different levels. जब टाइगर की बात आती है, मानस टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में
टाइगर पॉपुलेशन को फोकस किया जाता है कि वेयर टाइगर्स लीव, उस पूरे एरिया में टाइगर कहां पर है, तो दैट टाइगर एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ कोर टाइगर एरिया। तो ये चीज याद रखना है, कई बार सेपरेट होंगे, सेपरेट सेंचुरी, नो नेशनल पार्क, नो टाइगर रिजर्व, और सेपरेट नेशनल पार्क, नो सेंचुरी, नथिंग, बट समटाइम देयर में बी कॉमन थिंग। और क्यों हुआ इसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि इनिशियली गवर्नमेंट ने सेंचुरी डिक्लेयर किया। अब ऐसे समझो, इनिशियली व्हाट हैपेंड, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सेंचुरी, बाद में लगा कि प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया नेशनल पार्क। फिर बाद में पता चला कि यहां तो टाइगर्स भी है, टाइगर पॉपुलेशन भी है, एंड टाइगर ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया टाइगर रिजर्व। तो वो ग्रेजुअली होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, गिर फॉरेस्ट, यू नो वेयर इज द गिर फॉरेस्ट, गुजरात, गिरनार फॉरेस्ट। So now Gir forest in 70s government of Gujarat declared a Gir sanctuary for protection of aesthetic land, right, aesthetic land। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके गिर नेशनल पार्क बनाया, जैसे गिर नेशनल पार्क, ताकि एस्थेटिक लैंड को पूरी तरह बचाया जा सके, टू प्रिवेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ग्रेजुअली हैपेंस, समय के साथ होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ही इज आस्किंग द क्वेश्चन। नहीं, क्लैश नहीं होता। हाँ, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लैश नहीं होगा, नहीं होता। रीजन क्या है कि जब ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, वो सारा एक वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाता है। दैट मींस ओनली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो एरिया है, विल लुक इनटू दैट वन। इसमें सपोर्ट क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द सपोर्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड, then the state government of that area where the tiger reserve is managed by the forest department or the wildlife department of the state, हर स्टेट में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। उनको कौन असिस्ट करेगा, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो क्लैश कहां होता है, मैं बता रहा हूं, क्लैश वहां होता है जहां पर कुछ सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ रीजन हो। कई बार मैंने बताया ना, पॉलिटिकल रीजन कुड बी द रीजन। तो वहां पर कई बार ऐसे होता है कि सेंटर कुछ कह रहा है, स्टेट वो मान नहीं रहा है ना, स्टेट इज नॉट विलिंग टू एग्री विद दैट। और या क्लास ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रपोज कर रहा है कि वी वांट टू डिक्लेयर दिस एरिया, बट सेंटर इज नॉट एबल टू एग्री विद दैट। तो वहां पर है, तो जो मैं मानता हूं कि बेस्ट वे क्या होता है, द डिस्कशन एंड सिटिंग टुगेदर, कि वेदर सेंटर एंड स्टेट शुड कम टुगेदर इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन and they decide the course of action, कि अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कि अब क्या करना चाहिए। तो क्लैश होता है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्लैश नहीं होता, होता है, वहाँ होता है। कई बार ऐसे मुद्दे वाइल्ड लाइफ आ जाता है जहां पर हमें कंजर्वेशन का आता है, तो वहां पर वही तरीका होता है कि उस जगह पे कि वो करना चाहिए, वहां पर साथ में मिलके। तो ये चीज है अभी भी, जैसे जब थियोरी पार्ट आप पढ़ते हो, कंजर्वेशन पार्ट, ये तो हो गया थियोरिटिकल पार्ट है। जब हम रियल ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, a lot of challenges are there, or you know that the forest officer, like there is one service called Indian Forest Service, जब वो वहां पर होते हैं, अब वहां पर भी होता है, प्रेशर भी होता है। अब जैसे एग्जांपल चीता कंजर्वेशन, चीता में क्या था, इनसे चीता जो डेथ हो रहा था, तो किस पे प्रेशर बिल्डअप होगा, जो वहां का वाइल्ड लाइफ जो है आईएफएस ऑफिसर है, कई बार क्या होता है, सस्पेंड कर देते हैं उनको, है ना, सस्पेंशन भी करते हैं कि क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो वो सारे इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ट्राई किया जाता है कि बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट टुगेदर गो फॉर द कंजर्वेशन पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट। अब जैसे एक और क्लास कहां पर होगा, ये वाले में होगा, कम्युनिटी रिजर्व। क्या है कम्युनिटी रिजर्व, लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज आर देयर। तो वो लैंड किसका है, लोकल कम्युनिटी का। कम्युनिटी रिजर्व में क्या है, लैंड बिलोंग्स टू लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अ कम्युनिटी रिजर्व। तो अगेन इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल विद द गवर्नमेंट। तो वहां भी कई बार क्लैश हो जाता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर करना है ना, कुछ इकोनॉमिक यूज करना है, दैट वुड आल्सो रिजल्ट देयर। तो उसको मैनेज किया जाता है। जनरली व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर यू विल कम अक्रॉस दोस काइंड ऑफ एरिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड इन द फ्लो चार्ट एंड विल डिस्कस दैट एरिया। क्वेश्चन मार्क में तो कोई बॉडी नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक अथॉरिटी। क्वेश्चन मार्क का मतलब है there is no single authority to manage elephant reserve.
We don't have the body there. अभी हाँ मैं I'm coming to that one. Biosphere reserve, sanctuary वो difference हम लोग आ रहे. Let me write few more things here. In this one, what comes here very important. एक और concept है eco sensitive zone, ESZ. मैं ये सेपरेट लिख रहा हूं. Ecologically sensitive area, so ESZ, eco sensitive zone. Now this ESZ comes under Environment Protection Act, not under Wildlife Protection Act. Where the government declare ESZ? Under the Environment Protection Act 1986, not under Wildlife Protection Act. That means under Wildlife Protection Act, there is no definition of ESZ. There is no such kind of provision. So protection of ESZ, we'll see in the classroom what is ESZ. That comes under Environment Protection Act. And then I have mentioned here this one, biosphere reserve. So I'm writing separately here biosphere reserve. So the concept of biosphere reserve, we'll see in the classroom here, right? The concept of biosphere reserve, that comes from UNESCO program. UNESCO Man and Biosphere program. I write in the bracket, UNESCO, which is a UN body, you know that, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO MAB. हम लोग क्लास में भी हम पढ़ेंगे हम लोग आज MAB प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है. It is a international program, scientific program of the country, and we will see today by the map 18 biosphere reserve, 18. And central government has notified 18 biosphere reserves, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल किया गया है ना. लास्ट वन वाज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, एंड यू आल्सो नो पन्ना इज आल्सो टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, एमपी में वहां पर है. तो दैट कम्स अंडर यूनेस्को प्रोग्राम. अब मैं इसका बताता हूँ क्या रीजन होता है. व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एनी इंटरनेशनल प्रोग्राम, एनी ट्रीटी, एनी कन्वेंशन, राइट, so we have a provision under constitution that we can implement at the domestic level, है ना. उसके लिए आर्टिकल जो है आर्टिकल 253 वहां पर आता है, जहां पर पार्लियामेंट को पावर होता है कि ऐसे कोई भी इंटरनेशनल चीजों को हम नेशनल लेवल पे करें. तो बायोस्फीयर रिजर्व ये याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कंप्लीटली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसलिए मैंने भी यहां जो लिखा है वाइल्ड लाइफ कंकरेंट लिस्ट में कहां पर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो कहां पर स्टेट एंड सेंटर का पावर्स है, इस जगह पर. वेयर द पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कम्स, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, हियर द पावर कम्स. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू बायोस्फीयर रिजर्व, इज ऑल डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट यस, हु विल मैनेज द बायोस्फीयर रिजर्व, स्टेट गवर्नमेंट. बट हु नोटिफाइज इट, सेंट्रल गवर्नमेंट. विल सी इन द क्लासरूम बेसिक पॉइंट, आई विल कम इन टू दैट वन. तो ये एक पार्ट को याद रखना है. नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन विल सी इन द क्लासरूम सेपरेटली कि हाउ डू यू मैनेज द फॉरेस्ट. नाउ लेट्स सी एक्सेटिव कंजर्वेशन. कौन सा प्रोग्राम? कौन सा? हाँ, इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है ना. नहीं, आप कह रहे क्या चाह रहे हो? इंस्टीट्यूट में आता है. हमेशा याद रखना है, गवर्नमेंट 99% will do NC2. 1%, any 1% where that animal is not able to survive, that plant is not able to survive, then it goes to XC2. XC2 is always the last resort. Now what is XC2 here? XC2 is outside the habitat, outside natural habitat. See, the government will always try to go for in situ, right? But if by whatever reasons, maybe natural cause, maybe because of human problems, animals are not able to survive, plants are not able to survive, then the government resort to XC2. Now what is XC2 here, outside? So first of all, you know this, for plants, we declare this one, botanical garden. Botanical garden, see, remember that
botanical garden, first major objective is conservation. Second comes education, research, public awareness. पहला क्या होता है? कंजर्वेशन. दूसरा क्या है? एजुकेशन और रिसर्च. और तीसरा पार्ट क्या होता है? पब्लिक अवेयरनेस. People visit botanical garden. Right? Those areas we see that. Then you know that sometimes botanical garden, very big botanical garden, like if you visit Ooty, Udagamandalam, Ooty has a very big botanical garden, right? We have botanical garden throughout the country. Many of the states have formed botanical garden. If you talk about Delhi NCR, there is a Noida. There is one metro station named Botanical Garden. It's a small one. But let's say Lucknow. Lucknow has a botanical garden. Hyderabad has got botanical garden. So many places botanical gardens have been created. So their botanical garden, sometimes a big botanical garden, large area, may even have this herbarium. The herbarium is for herbs, small plants. Right, small plants, their samples are conserved. Sometimes herbarium is in the agriculture university also. Right? Sometimes you will find trees. Trees के लिए arboretum होता है. This is for tree species. Arboretum. वहाँ conserve किया जाता है. Then for different type of plants, seed banks are there. Worldwide seed banks are created. Now this is called cryopreservation. Cryo means sub-zero temperature. That means very low temperature. क्रायोस्फीयर जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्रायोस्फीयर वर्ड आता है. क्या होता है क्रायोस्फीयर? जो कि पोलर एरियाज को बोलते हैं, जहां सब जीरो टेम्परेचर होता है, वेरी लो टेम्परेचर इज देयर. सो सेम वे क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग. लेट्स से इफ यू हैव टू मेक अ सीड बैंक हियर इन दिल्ली, so what is done? That facility will be completely frozen. All the seeds will be kept into the box and they freeze, right? So the seeds will not germinate. इसमें दो नाम आते हैं सीड बैंक का. एक है स्वालबार्ड. Where is Svalbard? Svalbard. If you write here, you will come across two names here. One is the Svalbard seed bank. There is an Arctic there. It's a global seed vault बोलते हैं. Global seed bank is the world's biggest seed bank. Is Arctic, Norway. There is an island called Svalbard that is very, very near to North Pole, Arctic Ocean. In that Arctic Ocean, there is a small island called Svalbard. Now the Svalbard comes under sovereign powers of Norway, Norwegian government. And there under the ice, seed bank has been created. Many countries have donated seeds. इसको कहते हैं doomsday भी कहा जाता है. What is doomsday? When the civilization, human civilization, and the last day of that part, catastrophe. Those seeds can help in the agriculture part. All these are kept there. In India, in Ladakh, there's a place called Changla. La, La is the pass, mountain pass. And Changla pass is there. There India has created a seed bank. Now, you know that Ladakh is high altitude, more than 3,000 meters above sea level. And naturally the temperature is very low. So there we keep the seeds. ये आप कह सकते हो कि इंडिया का डूम्सडे है. ठीक है. और ये सेकेंड बिगेस्ट है वर्ल्ड में. सबसे बड़ा है स्वालबार्ड एंड दूसरे नंबर में आता है इंडिया का लद्दाख में. एंड इट इज मेंटेन्ड बाय DRDO. I write the name of the organization also there. Normally people think DRDO is for missiles, submarine, fighter jet. DRDO labs are also involved with life science. They also devote the research in life sciences. And there is a institute of DRDO in Ladakh also there. उसका नाम है DIHAR, DIHAR, Defense Institute of High Altitude Research. What is the name of the organization? Defense Institute of High Altitude Research, DIHAR. They maintain this bank. But seed banks are worldwide. Even in India, we have seed banks in other places also there. But there we refrigerate it, freeze it.
ऑल द सीड्स आर फ्रोजन। ठीक है, तो ये भी एक एक्सिटिव फॉर्म पे। नाउ फॉर एनिमल्स, मेनी टाइम्स इन करंट अफेयर्स यू विल कम अक्रॉस दिस वन, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, क्यों उसको कैप्टिव बोलते हैं? क्योंकि एनिमल्स को वाइल्ड से लाया जाता है, वहां रखा जाता है और फिर उसको रिप्रोड्यूस कराया जाता है, ब्रीड कराया जाता है, so that the young ones can be taken care, and when the young ones become matured, they are again returned back to the forest, they are taken back to the wild. इंडिया में बहुत सारे स्पीसीज का हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, यू आर अवेयर ऑल्सो दैट फॉर वल्चर in Haryana, very near to Chandigarh, Pinjore, right? Pinjore, Jatayu breeding center. Jatayu, you know, that's the name of the bird. So Jatayu bird, based on that Ramayana epic, Jatayu breeding center, there's a vulture breeding center in Pinjore. Where is Pinjore? Haryana, state of Haryana. ये पॉपुलर नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पिंजौर ही है, ये ध्यान रखना है। पिंजौर इज वन ऑफ द पॉपुलर place to breed vultures. Why vultures have declined? Because diclofenac, painkiller drug. लेकिन इंडिया में और भी जगह है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक टाइम था जहां वल्चर्स बहुत कॉमनली बहुत जगह दिखते थे, लेकिन अब उसका पॉपुलेशन कम हो गया, मोर देन 90%। बंगाल में भी वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर है। आज हम लोग एक बार देखेंगे टाइगर रिजर्व में, एक जगह है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व। कहां है बक्सा टाइगर रिजर्व? वेस्ट बंगाल किस पार्ट में? वेस्ट बंगाल एज स्टेट कहां पर बक्सा टाइगर रिजर्व है? सिलीगुड़ी में है, जलपाईगुड़ी, वहां वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। फिर जूनागढ़, कहां है जूनागढ़? गुजरात, वहां वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। इंडिया में दसों ऐसे जगह पे है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। व्हाट इज द एग्जांपल हियर? वी कीप द वल्चर अंडर कैप्टिविटी एंड ब्रीड देम एंड देन वी टेक इट बैक। स्नो लेपर्ड, where we find snow leopard as an animal? Which part of the country we have population snow leopard? Himalayan range, right? Himalayas have got a snow leopard population. We have even the breeding center for snow leopard. I'll give you one good example. Hemis, there's a place called Hemis, Hemis. Hemis is a national park. Where is Hemis national park? लद्दाख। एक जगह बोलते हैं चंगथांग, है ना, प्लेटू रीजन वहां पर है। हेमिस है, स्पीति वैली है, जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ने वहां ब्रीडिंग सेंटर्स भी बना रखा है स्नो लेपर्ड का। तो ऐसे कई भी जो एनिमल्स हैं जो आज खतरे में, जो पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है, फॉर देम वी हैव अ ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, एंड इट विल हैपन विद एनी एनिमल, लेट्स से टाइगर और एलिफेंट और राइनोसेरस, एनी एनिमल which is almost to the brink of extinction, then the government will set a breeding center. अभी जैसे एग्जांपल है, लास्ट क्लास में बता रहा था GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके लिए एक प्रोजेक्ट है गोडावन, राजस्थान में बोलते हैं गोडावन। दैट बर्ड इज कॉल्ड गोडावन, इज अ फ्लाइंग बर्ड, GIB। उसके लिए वहां पर अभी ब्रीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स। देन कम्स व्हाट, व्हिच इज नेक्स्ट वन, जूलॉजिकल पार्क, जू एंड जूलॉजिकल पार्क। Like for example, Delhi Zoo is a zoological park, है ना। Many places you will come across written zoological park. एक होता है zoo, चिड़ियाघर, but when you say zoological park, और चिड़ियाघर नहीं लिखा होगा, वैसे commonly we say चिड़ियाघर, but zoological park is called प्राणी means animal. हिंदी word is प्राणी उद्यान बोलते हैं, zoological park बोला जाता है, where the animals are kept, again captivity only, but again what, they are provided natural setup. Zoological parks are always big in size, large area, but जो नॉर्मल हम चिड़ियाघर बोलते हैं वो छोटा होता है, पिंजरे में रखा जाता है। यहां पर भी क्या होता है, कैप्टिविटी होता है। टाइगर विल बी अंडर कैप्टिविटी, बट आप कभी भी आप जाना जूलॉजिकल पार्क में तो उनको फेंसिंग होते हैं, बट उनको जगह दिया जाता है, where they can move around, they have the water, food, everything is taken care. So they are called zoological park. What is the main objective of zoological park? Conservation. Then comes education, research, and last comes the recreation. What is recreation? People go to zoological park, see the animals. So that is the last part.
द मेन ऑब्जेक्टिव इज कंजर्वेशन. ठीक है. नाउ दिस पार्ट इज ऑल राइट विच आई हैव गिवन देयर. आई विल कम टू सेंचुरीज एंड एवरीथिंग. बट नाउ माय क्वेश्चन इज दैट apart from this, what we have right now, this all comes under which law? This one. Again, the same law. Wildlife Protection Act. Zoo, zoological park, breeding center, botanical garden. Again, we have seed bank. All this comes under Wildlife Protection Act. Okay? Now, let me ask a question there. Nowadays, biotechnology can be of help to conservation. Now tell me from science and technology, what is the role of biotechnology in wildlife conservation? कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में? That's what I'm not writing here, but आप आइडिया बताओ क्या? क्लोनिंग कर सकते हैं. गुड, वेरी गुड. स्पीसीज को हम क्लोन कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, वहां हम कर सकते हैं. और क्या क्या मेथड है? प्लांट्स के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि क्लोनिंग हम एनिमल्स का करेंगे. वेर क्लोनिंग करते हैं एनिमल्स का. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ठीक है. नहीं, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करना है, नॉर्मल प्लांट्स है, उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा? हाइब्रिड क्रॉप्स, फिर वो मिक्स हो गया ना. हमें नेटिव स्टॉक को बचाना है. अब ये समझो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, देयर विल सम चेंजेस विल बी देयर. व्हाट इज समथिंग कॉल्ड जीन पूल? व्हाट इज जीन पूल? द सेम वैरायटी यू हैव टू प्रिजर्व. नहीं वो तो हानि होता है. पेस्टिसाइड वगैरह तो पेस्ट वगैरह, हाँ पेस्ट को मार सकते हैं, इससे वो बच जाएगा. लेकिन अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और वही प्योर ब्रीड बोलते हैं, प्योर ब्रीड, दैट ब्रीड शुड नॉट चेंज. दैट रेस बोलते हैं ना, नस्ल, वो खत्म नहीं होना चाहिए. सी इफ यू टेक क्रॉस ब्रीडिंग, देयर विल सम चेंज इन द जेनेटिक एस्पेक्ट. नहीं हुआ ब्रीडिंग. नहीं, मेरा कह रहा है कि जो प्योर ब्रीड ऑफ प्लांट है उसको मेंटेन करना है. हमें क्रॉस ब्रीड नहीं करना है, ना तो हमें जेनेटिक मॉडिफाई करना है. वही सेम प्लांट को हमें इंक्रीज करना है नंबर्स और प्रिजर्व करना है. तो उसके लिए कौन सा मेथड है? विच मेथड कम्स देयर? नहीं, वो तो ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट और ड्रॉट टॉलरेंट और फ्लड टॉलरेंट, जीएम इज ऑल राइट देयर. बट माय क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी हैव प्लांट and we want to conserve that plant without doing any modification, without doing any kind of breeding, no cross breeding, not interbreeding. We want to preserve it, same variety of crops. आपको पता है टिश्यू कल्चर, there is a method called टिश्यू कल्चर. लैब में करते हैं ना, सेम वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रो इन हंड्रेड्स. ठीक है. फिर अब आता है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है? हम उसको मेंटेन करते हैं, सेम स्टॉक, सेम जेनेटिक स्टॉक को मेंटेन किया जाता है. किसके कहां करते हैं? प्लांट में. बट इफ वी रिक्वायर टू मेक इट रेजिस्टेंट, देन विल गो फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग. और वी वांट टू गिव सम काइंड ऑफ ट्रेट, देन वी गो फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग. वो बात क्या होता है? पहला क्या होता है? साइंटिस्ट क्या करेगा? वही प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाएगा? टिश्यू कल्चर किया जाएगा, विच कैन ग्रो इन द लैब. देयर इज अ मीडिया वेयर वी कैन ग्रो इट. ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग हमेशा याद रखना है, एनी काइंड ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज अगेन लास्ट रिसोर्ट. ना क्लोनिंग, बाय क्लोनिंग कैन बी नेचुरल, क्लोनिंग कैन बी डन हियर. क्लोनिंग में क्या होता है? यू गेट द सेम एनिमल विच यू डू थ्रू द मेथड ऑफ क्लोनिंग. लेट्स से इफ यू क्लोन टाइगर, विल गेट द सेम टाइगर. दैट पार्ट कम्स देयर. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ऑफ हेल्प टू not only rescue the animals, increase their population, but biotechnology can also help in de-extinction. What is de-extinction? Those species which have become extinct, they can be brought back. कैसे हम ला सकते हैं वापस? जो species extinct हो चुका है, species which have gone extinction, and we want to bring it back. So how it is possible to bring it back? With the help of biotechnology there. Again, you have said that one method is what? Cloning. We can clone them. अभी किसी ने कुछ बताया वहां पर, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुका है, which already been gone extinct, तो we can use, अभी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है this one.
gene editing tool here, Cas9. And plus we can use cloning method. हाँ वहाँ भी हम कर सकते, yes, correct, बिल्कुल सही, बिल्कुल. Sometimes artificial insemination कराते हैं, that can also be done. Now here I just want to mention this project called as here. It's called Revive and Restore. Is an international project, Revive and Restore. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक वूली मैमथ. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब ये काम चल रहा है, रिसर्च इज गोइंग ऑन टू ब्रिंग दिस मैमथ. You know, mammoth used to be found thousands of years back, Ice Age. And mammoth can be brought back. Why? We can modify what? Elephant. The closest, if you look at ancestry, lineage. So elephant comes into that. Right? African elephant, Asiatic elephant. So we can clone the elephant to give birth of mammoth. But what we require for mammoth? We require cells of mammoth, dead mammoth. Mammoth is dead. Where do we find the mammoth? Fossil. All the dead fossils are there. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि मैमथ को वापस लाने का. एक अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसका भी आया है, ये अभी एक्सटेंट नहीं हुआ है लेकिन ये हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाए. हॉर्सशू क्रैब. ना हॉर्सशू क्रैब जो है इसका बहुत ज्यादा डिमांड यहां होता है फार्मा इंडस्ट्री. इसका बहुत सारे जो टेस्टिंग होते हैं, ड्रग टेस्ट, इसका जो ब्लड होता है ब्लू होता है, ब्लू कलर्ड, देयर इज अ ब्लड देयर. तो इसको मरीन है, मरीन में सी एंड ओशन, इनको कैप्चर किया जाता है एंड द पॉपुलेशन इज एट रिस्क. हॉर्सशू क्रैब जो है, तो नाउ दे आर लुकिंग टू द मेथड हाउ टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सशू क्रैब. द बिग साइज क्रैब्स आर देयर. In India, we have in Odisha and all this, Bay of Bengal side, they are all captured because of its huge demand, right? तो ये बहुत सारे ऐसे स्पीसीज को फोकस किया जा रहा है जहां बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको इंक्रीज कर सकते हैं पॉपुलेशन. वी कैन इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, राइट? और इफ दे हैव एक्सटिंक्ट वी कैन ब्रिंग देम बैक. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द वेयर द टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल इन द कंजर्वेशन, राइट? बट कब आता है टेक्नोलॉजी, कब होता है? when every effort fails. Last chance, जब कोई भी effort animal के लिए नहीं हो पाता, then scientists will go for the technology part, right? So we'll do one thing. I've just mentioned that. Just go and see this one, and this part you have to just look into this area there, and you will cover in the science and technology part. But now let me go back here. This flow chart here, we'll focus on this one from mapping point of view. The concept and the map part will come. So today, today's class is based on this. We will also come to wetlands, Ramsar site. We'll come at the last. But what I will do here, let us first discuss. Let's go from bigger size, bigger to smaller. We'll narrow down. Let's first go to biosphere reserve. Let's discuss biosphere reserve, and from biosphere reserve we'll go to national park, sanctuary, community reserve, conservation reserve. One by one we'll see that. और फिर मैं क्या करूँगा, biosphere reserve को मैं बताने के बाद we'll see the map. Which are the biosphere reserves, right? So let us first focus on the biosphere reserve. Now biosphere reserve, I'll write first the major point, main key points which you have to keep at mind. The first is that is the international, what type of program? Scientific program. By UNESCO. So see, remember that whenever you come across UN body, what you find in the question paper written, I write in the bracket, you come across this word. Intergovernmental. Intergovernmental means by governments, where the governments take the initiative. That is not by NGO or not by any private. They may assist the government, but it is primarily by the government, intergovernmental, right?
So the name of the program, this now comes here, that's called Man and Biosphere Program. See, Man and Biosphere Program was initiated. This was initiated in 1971. लेकिन उस समय प्रॉपरली नहीं हुआ था, 75 से प्रॉपरली इसको किया गया. 71 में प्रपोज किया गया था कि लेट देयर बी अ प्रोग्राम टू प्रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे से जो है 75 से हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट्स हैव डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व. एंड टुडे वी हैव मोर देन 500 बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड वाइड. इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 18 ऑफ देम. नाउ व्हाट कम्स हियर, द कॉन्सेप्ट हियर. So what is the biosphere reserve? So when you say a biosphere reserve, so biosphere reserve is not a small area, not a small geographical area. It always looks into ecosystem approach, ecological aspect of there. So a biosphere reserve is either a terrestrial, land-based, right, or it may be marine or marine and marine ecosystem. See, whenever we use the word ecosystem, it refers to both living and non-living. Ecosystem concept का मतलब यही है कि जहां पर living plants, animals, bacteria, microorganisms और साथ साथ में air, water, soil, all the non-living factors are there. That's where the ecosystem comes. Forest, grassland, desert, river, ocean. It has an approach of ecosystem here. Terrestrial marine ecosystem with now what is your main thing? Unique. I'm underlining word there. Unique genetic diversity. It looks into genetic form of life that what is found in that area. Unique genetic diversity. Diversity together with human cultural values. You know that UNESCO looks into culture. So it also looks into the people who live there in that area, cultural aspect. आपको पता है यूनेस्को का जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल. तो the people who live in that biosphere, they are not removed. उनको बाहर नहीं करते हैं. They are the part of the ecosystem. और जो भी उनकी practices हैं, beliefs, customs, that is also kept here in the biosphere reserve. So what is the main thing here? जो वहां पर यूनिक जीन पूल है, whatever plants, whatever animals which are found there, they get conserved. और ये scientific program है. I've written the word here. International scientific program. Man part of the biosphere and biosphere, conservation management, which is linked with the human development. That's what scientific research. It promotes what? Scientific research. So I'll write in the next page there. ठीक है, it's all clear. All I've written here. So what it promotes there? So point number 4 you can write. Same you can keep writing note copy there. So here it promotes. It promotes one is this one, scientific research. Scientific research. Then conservation. Whatever flora and fauna found there. So conservation and management of a biosphere reserve. Now what is done under this program? By declaring three zones are there. इसमें क्या किया जाता है? जहां भी बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कोर, बफर एंड ट्रांजिशन. देयर विल बी कोर एरिया. आउटसाइड द कोर विल बी बफर zone, and the outermost will be transition. Any biosphere reserve, wherever we go in our country, let's say example Sundarban, Nanda Devi, Gulf of Mannar, wherever, so we find this is divided into 3 parts: core, buffer, transition. Again for the conservation management. And what is, I have said, research. It promotes scientific research of animals and plants there. So the 3 area. Now look at here. What is the transition here? Outside. From the outside world,
when we enter to the biosphere reserve, that means this is the when we come from outside. जैसे मान लो कि जब हम सुंदरबन जाएंगे तो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब पहला पार्ट जो हम एंटर करेंगे वो ट्रांजिशन एरिया होगा। द फर्स्ट पार्ट विल कम, सेम विद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, द फर्स्ट पार्ट विच विल एंटर विल बी ट्रांजिशन एरिया। एंड व्हाट विल ऑब्जर्व इन ट्रांजिशन एरिया? देयर विल ह्यूमन सेटलमेंट विल बी देयर, people may be living in that area. That means most of the settlements, most of the human habitation will find in the transition area. गांव वगैरह होंगे, बड़ा एरिया होता है, वहां लोग रह रहे होंगे, and they may be practicing their agriculture, aquaculture. So when we come to transition area, what comes the first thing in transition area? First thing is this one: sustainable economic activities. What do you mean by sustainable economic activities? Such as, let's say, one will be this one: ecotourism, tourism activities, hotel, restaurant, people who visit that area, they will be staying in the transition area, not into core and buffer. जो भी होटल रेस्टोरेंट जितने भी टूरिज्म के होते हैं वो सब बाहर होता है। देन अगेन व्हाट विल बी हियर? सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, पीपल हु लिव इन दैट एरिया विल बी कैरिंग आउट एग्रीकल्चर, livelihood, you know, their livelihood, whatever they are doing for a long time, that is allowed there. So whatever their work is, that will continue. Now what is done in the transition area? Mining will not be allowed, quarrying will not be allowed, any kind of factory, industry which pollute that environment will not be allowed. So what it bans here? There is a prohibition of all such harmful activities, mining, quarrying, right? Even the thermal power plant, TPP, thermal power plant, any kind of industries, big industries, all this will not be allowed in the transition area. क्या अलाउ किया जाएगा? जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनकी आजीविका है, लाइवलीहुड है, उनको अलाउ किया जाएगा करने के लिए। फिर भी वहां कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट विल बी कंट्रोलिंग देयर एक्टिविटीज, राइट? So that is where the transition area. Now then what comes the next after transition? You will move to the buffer area. From transition you will be entering to buffer zone. You will be getting into the buffer zone. Now buffer zone बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, छोटा होता है. It's a small area. Now even in buffer area you will find some settlement will be there. Again you will find some settlement. That means वहां भी कुछ ना कुछ लोग रह रहे होंगे, but not that maximum people कहाँ रहते हैं? Transition में. But you will find here. Now what is the purpose here? Purpose of declaring buffer area. The first thing is the purpose is this one: monitoring of a core area. पहला पर्पस क्या होता है बफर का? कोर में जो चल रहा है काम उसको मॉनिटर करना, निगरानी. अगेन व्हाट इज डन इन देयर? नॉट ओनली दिस मॉनिटरिंग ऑफ कोर एरिया, व्हाट इज सेकंड विल बी हियर? दिस वन एजुकेशन and public awareness. That means there will be some education program. You know, sometimes you know excursion, लोग जाते हैं ना excursion, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, तो वहां पर ले जाएंगे बफर एरिया. अब वहां पर कुछ है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, कुछ जगह सेंटर बनाए होंगे. जब आप कभी आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ सेंटर बने होंगे और वहां पर समझाया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज है, कौन सा प्लांट होगा, कौन सा एनिमल है कोर एरिया में. कभी भी आप whenever you visit such kind of biosphere reserve, so you will have such kind of a government centers will be there, and in the government centers you will see the detailed part of what is inside the core. core के अंदर क्या क्या है वो बताया जाता है. Now same thing is used for another purpose called training purpose.
इज ऑल्सो टेकन फॉर ट्रेनिंग पर्पज। किसको ट्रेन किया जाएगा? जो उसके स्टाफ है, ऑफिसर्स है, उनको ट्रेन करते हैं वहां पर। एंड देयर आर ट्रेनिंग सेंटर्स इन द बफर जोन। नाउ कमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एरिया, द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट। सो फ्रॉम बफर one will enter into the core area, and one will get into the core area, the central part. Now core area, when take the core area here, core area, the first thing, scientific research. वहां पे साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो फॉर व्हाट इज फर्स्ट थिंग हियर? साइंटिफिक रिसर्च विल बी देयर। Whatever the type of animals and plants found in that area, वहां पे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, देयर विल प्रोजेक्ट्स विल बी देयर, जो साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च कर रहा होगा। तो दैट इज साइंटिफिक रिसर्च इज डन। अदर थिंग व्हाट इज डन? स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। Whatever the species is found there, that is strictly protected. That means zero human interference. क्या यहाँ पर केवल ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या है? साइंटिफिक रिसर्च। बाकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। इवन टूरिज्म इज प्रोहिबिटेड। लेट मी राइट हियर, नो टूरिज्म। अगर आपको देखने जाना है अंदर कोर एरिया, यू नीड स्पेशल परमिशन। मतलब वहां सफारी वगैरह नहीं होता, ये चीज याद रखना है। यू शुड नॉट मिक्स दिस कोर एरिया विद टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। core area of biosphere reserve, there will be no tourism. Only one can get inside to see the core area with a special government permission, otherwise not. Allowed नहीं करते वो। यानी कि if you are going to Sundarban and you are going to Sundarban core area, again remember the core area of biosphere reserve, not the tiger reserve. Core area of biosphere reserve of Sundarban. Unless until you have a special permission, you will not be allowed to enter that core area. Restrict होता है। नीलगिरी, again you need permission for that. क्या वहां पर होता है? जनरली प्रोटेक्शन जो भी स्पीसीज है, रिसर्च वगैरह चलता है। आप कहां तक जाओगे? बफर तक जाओगे, नॉट टू द कोर एरिया। अप टू बफर इट इज अलाउड। तो दिस इज व्हाट कम्स हियर। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, अंडर माय मैनेजमेंट। नाउ आई विल बी डूइंग द मैपिंग पार्ट, but before I go to mapping part, what UNESCO does in this program, it maintains a list. What is something called World Network of Biosphere Reserve, and we have 12 of them. And again remember that. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, आप देखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम होंगे। I'll take some sample question. This part is okay there? Any doubt you have? Are you able to understand? ये मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है? इन केस क्वेश्चन कम्स ऑब्जेक्टिव टाइप, यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड, राइट? बट जनरली द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द मैप बेस्ड। आई हैव जस्ट गिवन आइडिया कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस बायोस्फीयर रिजर्व, यू शुड हैव एट द बैक ऑफ द माइंड। सो लेट अस नाउ गो इनटू दिस पार्ट ऑफ इट। यू राइट हियर पॉइंट नंबर 5. You write the point number 5. UNESCO list biosphere reserves into, now I'm writing this name here, World Network of Biosphere Reserve. So first let me provide you the list of these biosphere reserves. Then we'll go through the maps. Map we will see that. The World Network of Biosphere Reserve. इंडियन गवर्नमेंट ने 18 डिक्लेयर किया, 18। उसमें से क्या क्या ऐड है? लेट मी प्रोवाइड हियर। फर्स्ट दिस वन, नीलगिरी, राइट? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देन कम्स दिस वन, यू आर अवेयर ऑफ दिस, नंदा देवी। वेयर इज नंदा देवी? उत्तराखंड। देन यू आर अवेयर सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। देन अगेन यू नो इंडियन श्रीलंका, गल्फ ऑफ मन्नार। इनिशियली दिस 4 वर एडेड। शुरुआत में जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया तो उसमें ये 4 को ऐड किया गया। फिर इसके बाद 3 ऐड किया गया, विच आई एम राइटिंग हियर। एक ये नाम है, वेरी फेमस प्लेस नोकरेक, मेघालय, गारो हिल्स।
Then comes here from Madhya Pradesh, Panchmadi. The spelling यहाँ पे PACH है, but when you speak we say Panchmadi, है ना. पचमढ़ी जो जगह है, होशंगाबाद एंड और जगह है. देन कम्स दिस वन सिमलीपाल, उड़ीसा. इसको ऐड किया 3 को. पहले 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर इसके 2 ऐड किया गया. वो भी एमपी से जुड़ा हुआ है, एमपी छत्तीसगढ़. अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक. अचानक मार इज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. अमरकंटक यू नो नर्मदा, दिंडोरी, अनूपपुर, बिलासपुर, एडजॉइनिंग एरिया, नेबरिंग एरिया में आता है. और फिर इसके साथ ऐड किया गया ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसको ऐड किया गया. ठीक है, तो पहले 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ. फिर उसके बाद जो ऐड किया गया 10th वन इज इन केरला एंड तमिलनाडु, अगस्त्यामाला, अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व. देन द 11th वन सिक्किम, कंचनजंगा, कंचनजंगा इन सिक्किम, दिस वाज एडेड. एंड द लास्ट जो रिसेंटली ऐड किया गया पन्ना. मध्य प्रदेश में 3 है और तीनों ऐड किया गया. एमपी में 3 है, कौन सा 3 है? पन्ना, अमरकंटक एंड ऑल्सो द पचमढ़ी. और ये तीनों के तीनों वर्ल्ड नेटवर्क में, ऑल 3 आर इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. You will see through the map there. नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यामाला, कंचनजंगा, पन्ना. बाकी जो 6 अभी तक नहीं जो ऐड हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर दे में ऑल्सो गेट एडेड. एक है कोल्ड डेजर्ट, नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कच्छ, गुजरात, है ना, शेषाचलम, आंध्र प्रदेश. नाउ नॉर्थ ईस्ट व्हेन वी गो, मानस, डिब्रू साइखोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग. अब ये सब ऐड नहीं हुआ है, 6 अभी भी और है, क्या पता ऐड हो जाए. और ये भी हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल. अभी तो टोटल 18 है इंडिया का, कुछ और ऐड हो जाए. वी मे हैव न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, अभी तो ऐड नहीं हुआ है. तो दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर न्यू बायोस्फीयर रिजर्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड टू दैट लिस्ट, एंड ऑल्सो न्यू दैट मीन्स in this list, UNESCO list, world network that could be added. ठीक है, तो मैं एक काम ऐसा करता हूं, पहले थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, देन कम टू द मैप. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया, ये यूनेस्को के थ्रू है. जो आपको मैप दिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है. नाउ लेट्स लुक एट हियर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है. We can simply see here the part of ये जब तक आप तैयारी कर रहे हो, ये आपका हमेशा रहेगा. ठीक है, यूपीएससी वेबसाइट, लेकिन हमेशा रहेगा. और ये हमेशा आपको विजिट करना है. एक तो फॉर्म फिलअप करना, ऑल द गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग. सेकेंड इज दिस वन. ठीक है, मैंने क्या क्लास में क्या बताया, व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू शुड नॉट ओनली फोकस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, बट यूपीएससी कंडक्ट मेनी एग्जाम्स and environment questions are asked in various places. You should always make sure go to other exam which you have a common with this, like you know, Indian Forest Service, all these are there. Now when you come to here, this one, right, you have all this exam given here. Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है. बायोस्फीयर रिजर्व का द पार्ट होता है, दैट इज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू दैट. स्टेट गवर्नमेंट का वहां था नेशनल पार्क सेंचुरी, जो उसकी बाउंड्री है वो स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल पार्क सेंचुरी में आता है. लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
but again it is approval of government is taken there. Now look at here this one. Question number this 1. Wetland पे क्वेश्चन है. Jhelum river passes through Buller Lake, Ramsar site. Krishna river directly feeds Koleru Lake, and then meandering of Gandak river formed Kawad Lake, Kabartal or Kawad Lake, state of Bihar, Begusai. And Buller, you know, Kashmir, and you are aware Koleru is Andhra Pradesh. Now this is a map based question, and it is asking about rivers. मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी मैपिंग है उसके लिए आपका इंडियन ज्योग्राफी पे पकड़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. रिवर, माउंटेन, वेजिटेशन, ऑल थिंग्स यू शुड बी हैविंग वेरी प्रॉपर कमांड ओवर दैट. देन यू कैन कनेक्ट विद द रामसर साइट और नेशनल पार्क और समथिंग. हियर झेलम रिवर, लेट मी आस्क हिम, सही है गलत है? झेलम रिवर, बुलर लेक, सही है. द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज झेलम. This Buller Lake. What is the largest freshwater lake? Not largest lake. Largest lake is Chilika, but Chilika is brackish or salt water. But when you say freshwater, is the Buller Lake, है ना? Buller Lake और यहाँ पर जो पानी जो आता है, water, the main river is Jhelum, which is part of Indus. Jhelum is also meandering kind of river, which bring the water there. Now, second, Krishna river. Koleru lake is a shallow water lake, right? Eluru and Koleru, which comes there near Godavari district there. It feeds water from two rivers, Krishna and Godavari. That means Krishna river, Godavari river, and there are number of water channels are there, which drain into the wetland. Second is correct. Kabartal or Kawad Jheel, that is in the Begusai district of Bihar, right? And here the water comes from Budi Gandak. One is Gandak, second is Budi Gandak. You know, part of Nepal and this, the part of the tributaries to Ganga. उसके फॉर्म में पूछा गया यहाँ पर. इसका आंसर 1 and 2 है. फैक्चुअल है, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, और ये हर बार पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो है, दे आर आस्किंग एवरी टाइम देयर. नाउ लेट मी कम टू दिस अनदर क्वेश्चन हियर. When you come to this one, the next question here, this question number 9. अब यहां पर आपको देखो 22 पे रिजर्व है, अमरकंटक. दिस इज 22 पे रिजर्व. अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री. अगर किसी को यह भी पता हो कि सह्याद्री दैट इज अनदर नेम फॉर वेस्टर्न घाट्स, और जो एमपी का अगर आपने मैप देखा है तो वहां 2 माउंटेन रेंज है, विंध्या एंड सतपुड़ा. One is called Satpura. Pachmadi is the part of Satpura range. है ना, विंध्या अलग वहां पर है. And what is Amarkantak? Is a plateau, highland. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. One is wrong. It's not Sahyadri. It should be Satpura. Second, Biligiri Rangan hills constitute easternmost part of Satpura. अगर किसी को यह पता हो कि बिली रंगन कहां पर, इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका हैज गॉट बंदीपुर, नागरहोले, राइट, भद्रा. देन यू हैव अ बिली रंग, दिस प्लेस, बिलीगिरी रंग स्वामी टेम्पल इज ऑल्सो देयर. So if you know it is in Karnataka, Satpura is here, parallel. Vindhya Satpura is cutting in the central part. Karnataka is here down. It will not be easternmost, rather it will be southernmost, south. Second is wrong. Third, if you look at Sesachalam. What is Sesachalam? It is the biosphere reserve of state of Andhra Pradesh, AP. Now Sesachalam hills constitute southernmost part of Western Ghat. अगर आपको ये पता हो कि सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है और वो आंध्र प्रदेश में, एंड दैट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, नॉट द वेस्टर्न घाट. व्हाट इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? नीलगिरी. थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर इज नन. ऐसे क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन देयर. एनीथिंग टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाटएवर,
यू मस्ट नो द लोकेशन कि वेयर दे आर फाउंड। अगर आपको लोकेशन पता हो और ज्योग्राफी से आप लिंक करते हो तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 3-4 क्वेश्चन होते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। ठीक है, दिस इज व्हाट द environment question comes into that. That's why I took the 2 questions there. This is the way the UPSC has asked question. और ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने एक बार मैप के थ्रू देख लिया है यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी कहाँ आता है, ठीक, मैंने इसलिए बार बार बोला है यूपीएससी इज वेरी सिंपल एग्जाम, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं। अब जब करंट अफेयर्स के मटेरियल में आप पूरे होंगे, यहाँ क्या हो रहा है रीडिंग रूम लाइब्रेरी में, लगे हुए मुन्ना भाई की तरह, वही दिन रात दिमाग वहीं फंसा हुआ है। जो बेसिक चीजें होते हैं, जो नॉर्मल चीजें, वो नहीं जाके बस वहीं पे दिमाग लटका हुआ है, तो बाहर की जो सोच होती है वो खत्म हो जाता है। एंड व्हाट मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर डूइंग नाउ, दे मेक ब्लंडर इन द एग्जाम हॉल। ये सब डिफिकल्टी इज वेरी सिंपल वन, इसके लिए उतना ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए। अगर आपने देख रखा है 22 पे रिजर्व्स, अगर आपने देख रखा है वेटलैंड रामसर साइट, यू कैन इजीली गेट द क्वेश्चन, राइट। इसलिए पहले मैंने ये इंफॉर्मेशन बताया कि व्हाई बायोस्फीयर रिजर्व बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर इन द एग्जाम यू विल गेट क्वेश्चन। इवन यूपीएससी आस्क्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन अगस्त्यामाला वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को कि व्हिच आर द प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन अगस्त्यामाला। उसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, पेपारा, नैयर, सेंदुरनी, एंड देयर इज वन टाइगर रिजर्व कॉल्ड कलकड़ मुंडन धुराई। Even that question was asked, direct question was asked, ठीक है, ये पार्ट है। तो now let's go to the map here. We'll now go to the map part. That's what I have just taken into this. So we'll go first to the biosphere reserve, ठीक है। Let's go to the biosphere reserve first. पूरा जो biosphere reserve है, एक एक चीज उसका जानना जरूरी है। आप ऐसा करना, I will also mark here. आप atlas यूज करना चाहते हो, you can use atlas. At the same time, map which I have given, hard copy, आप इसमें ये ध्यान रखें, इसी हार्ड कॉपी में यू कैन मार्क द पॉइंट्स, ठीक है। वट एवर यू थिंक दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, यू कैन मार्क इट हियर एंड आई विल जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू वन बाय वन। ऑल आई गॉट दिस हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी सबके पास है? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सी, पहला मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हियर। लेट्स गो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इट। I'll zoom out so that people can see clearly. Right, मैं यहाँ से start करता हूँ। Why I'm taking northeast? Because now northeast has become, important from the exam point of view. A lot of developments and everything is there. That's why it becomes very important. So let us go through it one by one. If you look at the map here clearly, this is Arunachal Pradesh, right? Now you know that one very important river, Brahmaputra, and you know that this is called what? Sangpo, Tibet. अब तिब्बत part, तो Brahmaputra river, Sangpo, right? It enters the Arunachal Pradesh here. It forms a gorge and valley, deep valley. है ना? It takes turn, enter the part Arunachal Pradesh. We have 2 valley है, एक है दिहांग वैली एंड अदर को दिबांग वैली। अब ऐसे याद करो, ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी, इट टेक्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट यू टर्न एंड पासेस थ्रू 2 वैलीज, वी शेप वैली, और वैलीज है वहां पर। वन इसको दिहांग वैली, अदर को दिबांग वैली। इसको बोलते दिहांग दिबांग, right? This is called Dihang Dibang. Now it is the only biosphere reserve of state of Arunachal Pradesh. और ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें न्यूज में आ रहा है अरुणाचल को लेकर। अभी आपको पता है तवांग है ना, प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी था, रिसेंट था ना वहां पर, और रोड बन रहा है वहां पर, हाईवे सारा डेवलप कर रहे हैं वहां पर, तो अभी एयरपोर्ट भी आ रहा है वहां पर। एंड दैट इज पार्ट ऑफ चाइना बॉर्डर एरिया, डेवलपमेंट इज देयर। और वहां उसके पार्ट में इसको कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं इंडिया का। वन है लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, या सुबह 5 बजे ही, राइट, इवन 5 o'clock पीपल आर वेरी एक्टिव। So that is the area where
called as a Dihang Dibang. Which river? Again, see geography. What is geography? Brahmaputra. Linked with the mighty Brahmaputra river. That's where the Dihang Dibang comes. ठीक है. और बायोस्फीयर मैंने क्या बताया? इकोसिस्टम होता है, लार्ज एरिया. तो ये कैसा एरिया है? अगर मुझे इसमें कुछ एरिया ऐड करना हो तो व्हाट टाइप ऑफ एरिया इज दैट? हाई ऑल्टीट्यूड, माउंटेनियस है ना. अब मैं देखो कैसे पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूं. मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, सुंडालैंड and Himalaya. Now look what will happen here. This place, Dihang Dibang, is a part of two biodiversity hotspots. One is Indo-Burma. What is Indo-Burma? Northeastern part. And second is Himalaya. So which Himalaya? Eastern, not western. So it's basically confluence of two areas. What is the area? One is this one, part of Eastern Himalaya range. And second is the part of Indo-Burma. ये दोनों के दोनों वहां पर कॉन्फ्लुएंस इसका यहाँ होता है. The meeting is there. Let's say question in mapping based question comes, which is that one? The two biodiversity hotspot comes, Eastern Himalaya plus Indo-Burma hotspot. That becomes the part. और यहाँ पर जो स्पीसीज है, क्या करना है? जब भी आप ऐसे पढ़ते हो हमेशा याद रखना है, टेक बायोस्फीयर रिजर्व, देन ट्राई टू गो नैरो डाउन. दैट मीन्स अभी देखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व के पास कौन सा सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है, राइट? इज देयर एनी टाइगर रिजर्व, व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज आर फाउंड? तो लेट मी नाउ लिस्ट देयर. सो व्हेन यू लुक एट दिस एरिया, दिस पार्ट, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, कभी भी हमेशा याद रखना है, व्हेन यू टॉक हिमालयन रेंज एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन, वन विल ऑलवेज फाइंड स्नो लेपर्ड. So one of the very important species is this one, snow leopard. Snow leopard in that area. अब मैंने क्लास में बताया था नाम ढापा, एंड मैंने वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लेपर्ड का नाम बताया था, क्लाउडेड, है ना, क्लाउडेड लेपर्ड, विच इज स्मॉल साइज लेपर्ड. तो नॉट ओनली स्नो लेपर्ड, इट इज ऑल्सो नोन फॉर क्लाउडेड लेपर्ड. क्लाउडेड लेपर्ड का वहां पर होम है, दिहांग दिबांग. So this area known for two type of leopard species, clouded leopard and snow leopard, which is found in that area. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश is known for different type of tribes. अब मैं यहाँ पर ट्राइब का नाम बता दो. एक ट्राइब ये है मिश्मी, है ना, मिश्मी ट्राइब होता है. एंड इवन दे हैव पैसिफिज्म. तो एक मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, लेट मी राइट हियर, मिश्मी ट्राइब के द्वारा होता है, और मिश्मी टाकिन, TAKIN, टाकिन. व्हाट इज टाकिन? इज लाइक अ बुफेलो. जैसे बुफेलो होता है ना, आपने देखो याक वगैरह, याक आपको पता है, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के याक, तो वैसे ही टाइप का कैटल ब्रीड है, टाकिन कहते हैं. इज एंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज फाउंड इन दैट एरिया, एज एंडेमिक टू दैट एरिया एंड मेंटेन इन दैट पार्ट. ठीक है, उस एरिया में वहां आता है. तो दैट इज वेयर, सो व्हेन यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, देन अगेन नैरो डाउन. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पर्टिकुलर बैच व्हिच आई एम टेकिंग दैट, ये तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, बट यू विल गेट अ कंपाइलेशन. मैं भी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन मंडे. बट अगेन ये सब चीज समझना है. एडिशनल इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू फॉर योर बैकअप सपोर्ट टू रीड बिफोर द एग्जाम. ठीक है, और वो कहीं नहीं मिलेगा. मैंने बता दिए सारे जो हो रहे हैं. ठीक है, यू विल गेट इन द क्लासरूम देयर, यू विल बी गेटिंग दैट कंपाइलेशन देयर. बट हाँ, अभी जो बता रहा हूँ ये चीज ध्यान में रखना है. अब देखो क्या हुआ, अभी जो मैंने बताया आपको याद रहेगा, दिहांग दिबांग. अब दूसरा चीज समझो. आपके मैंने क्या बताया, अरुणाचल इज कमिंग द न्यूज. दूसरी बात क्या है, सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है, आपको देखना है पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या ये नाम आया है, वेदर दिस नेम हैज कम. And something in the news and something in the previous year exam question, if the name has not been asked, so there is always a possibility or probability of questions having such name. Because why? What UPSC does, it will always try to go to unknown areas. अब let's say for example, अभी जो मैंने UPSC क्वेश्चन दिखाया, अब वो नहीं पूछेंगे सिसचुलम,
अमरकंटक हो गया, अब इस साल कोई अमरकंटक नहीं आने वाला है. नो शेषाचलम विल बी देयर. एंड दिस आई बीन ऑलवेज सेइंग कि मोस्ट ऑफ द current affairs material, what they do, they take the base of the previous year question and they try to provide you information on that. Biosphere reserve, we have 18 biosphere reserve, and UPSC can go into any of such biosphere reserve, and UPSC has a habit of not repeating the question. Biosphere reserve topic is important, but not now. They will not ask you the topic which has the area which has been asked the last year. They'll ask something else. तो ये पहला है, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो पहला पार्ट ये. अब आपको दो चीज पे ध्यान रखना है. असम में है, अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन बताऊंगा. सी यू सी हियर 2 नंबर एंड द 3 नंबर. ये असम का रीजन है, दिस एरिया. नाउ इफ यू लुक एट द पॉइंट नंबर 2, दैट इज वेरी नियर टू अरुणाचल प्रदेश. दैट मीन इफ वन हैज टू गो वाया असम टू अरुणाचल प्रदेश, विल क्रॉस दिस एरिया. और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, डिग बॉय. क्या है डिग बॉय? जो होता है रिवर भी है और ऑयल फिल्टर जो फील्ड वहां पर है. तब जो मैं बताने जा रहा हूं, डिब्रू साइकोवा. व्हाट इज द नेम हियर? सी डिब्रूगढ़. दिस इज कॉल्ड डिब्रूगढ़, डिब्रू साइकोवा. यू विल रिमेंबर इट. सी यू विल बी रिमेंबरिंग इट. Shall I change the color of the pen? Red, black, you are able to see? Red will be more better, I think. That will be more visible. So Dibru, dark में कर दे. I'll increase the font size there. Dibru Saikhowa. Let's understand here. ये जो जगह है, आप यहां से अरुणाचल भी जा सकते हो. You can also go to Nagaland. नागालैंड में एक जगह है, दीमापुर बोलते हैं. राइट, दीमापुर कल मैंने बताया था कि वन कैन गो. देयर इज अ, यहां से राजधानी चलती है फ्रॉम न्यू दिल्ली. डिब्रूगढ़ राजधानी है. ठीक है, डिब्रूगढ़ तक जाती है वो राजधानी. डिब्रूगढ़ राजधानी है. डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, दूसरा नाम है तिनसुकिया. लेट मी राइट हियर. इसका 2 डिस्ट्रिक्ट है. वन इज डिब्रूगढ़, सेकेंड नेम इज तिनसुकिया इन असम. Now what is very important here? How you can remember it? मैं ये 2 चीज बताता हूं, उससे आपको याद रहेगा. First, area wise is the smallest area. Out of 18 biosphere reserves of our country, Dibru Saikhowa has the smallest area. अगर हम 18 biosphere reserve ले लें, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल या एरिया, that is a Dibru Saikhowa, smallest area. और दूसरा बात जो है, ये न्यूज में था 4 साल पहले, 4 years back, it was the news. इसी जगह पे बहुत, मैंने भी बताया, डिग बॉय ऑयल फील्ड. अब मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं. लेट मी राइट दिस नेम. आई विल यूज द ब्लैक ओनली. आई एम राइटिंग द नेम हियर. इस जगह पे सेकेंड नंबर, व्हाट वाज इन द न्यूज? बागजान. क्या कोई बता सकता है ये बागजान ऑयल फील्ड क्यों न्यूज में था? व्हाई इट वाज इन द न्यूज? Bagzan oil field. There was a fire. है ना, oil field में वहां पर आग लग गया था. There is a fire in the Bagzan oil field. And Bagzan oil field is very near to Dibru Saikhowa. And which animals you find in Assam? Rhinoceros, one-horned rhinoceros, elephant, tiger. So that was covered in Down to Earth magazine. Because that fire, where that fire was there? In an oil well. Right, oil well of Bagzan, and that impacted the Dibru Saikhowa. और वहां नेशनल पार्क भी, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है. और इसका नाम क्यों है? क्योंकि वो नदी है, रिवर. साइकोवा इज रिवर. साइकोवा इज रिवर, इज नेम्ड आफ्टर द रिवर कॉल्ड साइकोवा. Rhinoceros are found, and it was impacted because of the Bagzan oil field, that accident that was in the news. हो चुका 4-5 साल हो चुका, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया. ठीक है, तो पीपल व्हेनेवर यू टॉक अबाउट असम, 2 ही नाम कॉमन सबके दिमाग में आता है, काजीरंगा एंड मानस. डिब्रू साइकोवा का नाम ही नहीं आता. बट दैट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. नाउ कम्स, यू आर अवेयर, वर्ल्ड फेमस मानस. हमेशा याद रखना है. अगर आप मैप को देखो, इसलिए मैंने जूम किया है. इफ यू लुक एट दिस मैप, दिस इज मानस, करेक्ट? एंड इफ यू सी, इट इज एडजॉइनिंग टू विच कंट्री? Bhutan. So it is basically transboundary. What is transboundary?
That means you can go from this Manas to the Bhutan side. भूटान गवर्नमेंट ने भी एक नेशनल पार्क बना रखा है, इट्स कॉल्ड रॉयल मानस नेशनल पार्क. रॉयल मानस नेशनल पार्क, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस साइड. मतलब इंडियन के बॉर्डर के साइड में मानस है, और जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते भूटान जाते हैं तो वहां पर रॉयल मानस नेशनल पार्क, बहुत नाम है, उसका भी नाम मानस ही रखा है. क्यों रखा है, इसका रीजन में बता रहा, क्यों रखा है मानस, दिस रिवर. अब आप समझो कि अब मैं आपको लैंडस्केप बता रहा हूं, क्या लैंडस्केप है. दैट मानस रिवर बिकम्स अ डिवाइडिंग लाइन. You are able to understand that Manas River becomes a dividing line between India, that is Assam, and the Bhutan. The river comes into that, and you are aware that Manas is a tributary of Brahmaputra River. It meets the main Brahmaputra River. Now tell me from Indian geography. When you look at any river, there is something called right hand and something called left hand. Tributaries are there. So Manas is which side there? यहां से ना, ब्रह्मपुत्र is here. See, Dihang is here. This is Brahmaputra river, which goes here. This is Brahmaputra. So it comes from here, this direction. Right side से आता है. Which are other tributaries of Brahmaputra river? Let me ask Indian geography. One is Manas. Which other tributaries? Dhansri, Subansri, Lohit, है ना. Even Dihang Dibang, they are also tributaries of Brahmaputra river. तो बहुत सारे tributaries है वहां पर. ठीक है, are you able to understand here? So that Manas. अब मुझे बताओ, which are wildlife famous for Manas? मानस में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ है जो है? Rhinoceros one, tiger is another. That is also there. Elephant, even elephant. एक और चीज है, there is also known for swamp deer. What is swamp deer in Hindi called? बारहसिंगा, swamp deer. और एक और एनिमल है, there is a wild buffalo, water buffalo. It will be right here. Water buffalo is there. This water buffalo you will find in that water area. Then you have this one swamp deer, which is found in that area. Then again rhino, one-horned rhino. You have a tiger. You have elephant. These are called big five. Big five which is found in that area. Manas one. Yes, अभी मैं उसमें आ रहा हूँ. गोल्डन लंगूर मैंने बताया था. एक और चीज बताया, हुलॉक गिबन. मैंने क्लास में बताया था, हुलॉक गिबन, only ape found in India. And I'll add one more very important name, right? Not only hulock gibbon and golden langur. This area, I've also already mentioned in the classroom, pygmy hog. Remember that pygmy hog? मैंने क्लास में बताया था, the smallest pig of the world, pygmy hog. And we have a breeding center there. मानस के ही पास में जगह है नामेरी, right? There is नामेरी place there, असम का border. Pygmy hog का breeding center है. तो देखो, अब मैपिंग का यही एडवांटेज होता है. व्हेन यू आर डूइंग मैपिंग, ऐड इंफॉर्मेशन सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट. आपको याद रहेगा उसमें. तो टू आर इन असम. एक और चीज मैं मानस के बारे में ऐड करता हूं, इससे आपको याद रहेगा. मानस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ रिमेंबर दैट यूनेस्को हैज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इसमें क्या क्या होता है? कल्चरल इंपॉर्टेंस, नेचुरल इंपॉर्टेंस, and also mixed both cultural and natural. So if you look at natural important heritage site of India, Manas comes. Manas is the name there. Dibru-Saikhowa is not there, but Manas is a world heritage site. वो भी यूनेस्को का है, एक अलग प्रोग्राम है. वहां हम क्या करते हैं? वहां क्या होता है? हेरिटेज साइट क्या होता है? Which is old and intangible, cultural and natural. That comes there. और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व. We're talking about man and biosphere program. Okay? Now my question there, is Manas part of UNESCO World Network of Biosphere Reserve? No. मैंने भी दिया लिस्ट में नहीं है ना. All these three are not in that list of World Network. World Network list में तीनों नहीं है. ठीक है. Now if you come to this one, मैं एक काम ऐसा करता हूँ. Let me just change here and let me use the black only.
पॉइंट नंबर 5 क्या है बताओ? सिंपल है। ये जो जगह क्या है, कौन सा स्टेट है? मेघालय. And Meghalaya has got 3 parts. Which are 3 parts? I'll draw a boundary there. This part is Garo. This is Khasi. And this side Jaintia. This is right? Garo, Khasi, Jaintia. So where do you find Nokrek? What is this name called? Nokrek. Nokrek Biosphere Reserve. Which part is there? Garo. Garo is the western side. Now Nokrek is the highest peak of the Garo hill. यानी गारो पर्वत की जो चोटी है, शिखर सबसे ऊंचा जो है, उसका नाम है नोक्रेक. Why it is called? The Nokrek is the highest peak of Garo hills. Right? That's where the Nokrek comes into. Nokrek Biosphere Reserve. And I have mentioned that many of the insectivorous or orchid varieties are found in Nokrek. But again, you know that Nokrek is into the world network of Biosphere Reserve. Nokrek Biosphere Reserve. Right? So if you look at northeastern part, so Nokrek, then you have Manas, Dibru Saikhoba, Dehang Dibang. 4 are there. Now I am coming to the 5th one. You are aware. But generally सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं मानते. नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स बोलते हैं. Which are 7 sisters here? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, राइट, मेघालय, उसको मानते हो. कई बार असम वाले भी जब उनको बोलो नॉर्थ ईस्ट तो बड़े गुस्सा जाते हैं वो कि हमें नॉर्थ ईस्ट मत बोलो आप. राइट, कई बार होता है ना कि इट बिकम्स लाइक अ स्लैंग काइंड ऑफ, यू आर कैटेगराइजिंग द पीपल ऑफ दैट थिंग. क्यों ऐसा करना? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. राइट, so sometimes, but that is said because of geographical division. That's what part of this comes in, right? Sikkim, you know, a small state. Now tell me, Sikkim, which one? You all know that mighty Kanchenjunga, right? The Kanchenjunga there, part of Himalayan range here. Now tell me about Kanchenjunga. What all thing you know? You all are aware of Kanchenjunga? Yes. The font size बढ़ा दो. Kanchenjunga, I'll increase that. Kanchenjunga, what all thing you know about Kanchenjunga? Now, okay, I'll ask specific question. Himalaya is divided into 3 parts: Greater Himalaya, Middle Himalaya, Shivalik. So which Himalaya the Kanchenjunga will come? Greater Himalaya. Okay? It is one of the peaks of Himalayas, like Mount Everest, K2, Kanchenjunga. So Kanchenjunga कहाँ आता है? If we look at the highest peaks of Himalaya, so which is third number? Third number is Kanchenjunga. Mount Everest first, second come K2, right? And third is Kanchenjunga. Kanchenjunga comes into that. And Kanchenjunga, ये जो है mixed heritage site है. Kanchenjunga National Park has been declared mixed heritage site. That means is India's first mixed heritage site. ठीक है? Both cultural and natural. Why natural? Himalayan range. And cultural, which religion? Cultural, Buddhism. क्या कैपिटल है सिक्किम का? अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताऊंगा मैं. गैंगटॉक. अभी लास्ट ईयर कुछ हुआ है. There was something in the news with respect to this area. And there is one very important river which flows through Sikkim and goes to West Bengal and Bangladesh. Tista River. And something was there in the news last year, one of the disaster which took place in Sikkim, flash flood caused by glacial lake outflow. Now which lake is that? The lake called this one, Lunak. Lhonak. South Lunak Lake, that burst was there. Lhonak. Lunak Lake. तो जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, Kanchenjunga is known for many glacial lakes. Is high altitude area. आपको ऐसे करंट अफेयर्स को जोड़ना है. Kanchenjunga is very high, more than 3,500, 4,000 meters. When you go to the Kanchenjunga, will be there. And there you have a glacial lakes are there.
अभी एक जो लेक का नाम है लोनाक, एंड साउथ ऑफ लोनाक लेक दैट लेक बस्ट. क्या हुआ था? मोरेन. यू नो व्हाट इज मोरेन? दैट इज अ ग्लेशियल डिपॉजिट. वॉल वाज देयर, एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वाटर वाज सो मच, इज दैट ब्रोकन द वॉल, मोरेन वॉल, एंड देन इंटायर वाटर केम डाउन, फ्लैश फ्लड. अब मैं जो दूसरा जो लेक के नाम लिखने जा रहा हूं, ये सब याद रखना है. यस, सुगमो लेक बोलते हैं, या कई बार वहां के लोकल लैंग्वेज छांगो लेक बोलते हैं, राइट? इन लोकल लैंग्वेज को छांगो लेक. इट्स अ टूरिस्ट साइट, पीपल गो टू सच काइंड ऑफ लेक देयर. सुगमो लेक is basically again glacial lake. It's a very pristine and beautiful site, right? इसलिए मैं बताया ना 26 मई नेक्स्ट डे यहां से भाग जाओ, गुड, राइट? बुरे कुछ नहीं करना है, ट्रेन में सिक्किम, राइट? 3 दिन में सिक्किम पहुंचना हो जाएगा, और बहुत अच्छा टाइम है, गर्मी का टाइम है, और वहां रहने में चिंता नहीं करना है, धर्मशाला वगैरह बहुत मिल जाएंगे, राइट? वहां पर सारे जो है धर्मशाला एंड ऑल दिस थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? हम प्रोसेस बनाएंगे, यू कैन प्लान इन दैट वे. So this is a very unique site. You have many of the lakes are there in that area there. And now what is the problem with these lakes, which I mentioned? Climate change impact, global warming, the lake outflows are there. Okay? Now last part about Kanchenjunga. Is it transboundary? Is it transboundary? Yes. So which all countries will come? One is Nepal. This side is Nepal. और दूसरे साइड क्या है? भूटान. एक वर्ड बोलते हैं ना, चिकन नेक. दिस चिकन नेक which lead like from Bengal one can get towards the Assam side, and you know that वो भूटान के साथ था ना डोकलाम इश्यूज. ओके, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. कौन सा पास है यहाँ पर? दिस हिमालयन माउंटेन पास, नाथुला. नाथुला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास which connect to which country? Nathula. Sikkim to which country? China or Bhutan? Nathula. Huh? ठीक है ना, China. We can go to China side. तो China भी है, ऐसा नहीं समझना है. Bhutan is one side, other side Nepal, and the third side is China. It's very important. वो होता है ना, अभी जो आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट, the earlier silk route kind of thing there. वो जाते थे वहां से लोग सब, नथुला वगैरह जो है. तो अगेन यू हैव टू कनेक्ट फ्रॉम दैट. इसलिए बताया कि मैपिंग यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ इन्वायरमेंटल पार्ट इफ यू नो ज्योग्राफी वेरी वेल, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट. सो आई हैव कवर्ड दिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नाउ लेट्स गो टू दिस वन. यू नो अबाउट दिस सुंदरबन, 6 number. Sundarban, all of you are aware about Sundarban. Now tell me about Sundarban Delta. What are geographical things you are aware? Sundarbans. Okay, right, very good. It is the largest mangrove forest of the world. है ना, मैंग्रोव वैराइटीज. इसका नाम क्यों पड़ा है आपको भी ये भी पता है, सुंदरी, है ना, हे सुंदरी, राइट? जो बोलते हैं ना, तो सुंदरी जो है वो क्या है, मैंग्रोव वैरायटी है, ठीक है? तो वहां पर सुंदरी, दिस नेम हैज कम, राइजोफोरा बोलते हैं, राइट? सो सुंदरबंस, विच रिवर्स आर देयर, डेल्टा ऑफ विच रिवर्स? गंगा, ब्रह्मपुत्र, एक और है मेघना. मोस्टली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बट द थर्ड वन विच कम्स मेघना, which form this delta, Bay of Bengal. Now there are number of islands are there. Now if you look at Sundarban delta, we have 1/3 area, land area, part of India's Sundarban. Remaining 2/3 is the Bangladesh Sundarban. Two countries comes, no? India and Bangladesh, right? Indian Sundarban and Bangladesh. अब मैं current affairs ऐड करता हूँ. अभी कुछ न्यूज में था कुछ दिन पहले. It has been declared as global common. It was recently in the news. What do you mean by global common? Anyone can use it, anyone can go there. That means, see, when you say global common, it belongs to entire humanity, right? So now India and Bangladesh together, they have declared in terms of global common. That means
this Sundarban delta can belong to everyone in the mankind. पहले क्या होता था, रेस्ट्रिक्शन होता था, अब उसको ओपन अप किया जा रहा है. Now what is very important, mangrove is one area which you find in this area. The mangrove forest is there, right? Now let me add here certain more thing here. Sundarban's delta, as I said, the number of islands are there. Now these islands are sinking because of the sea level rise. Because of sea level rise, these islands are sinking, and many of these islands are habitable islands where people live on those islands. At the same time, you know, the Sundarban gets battered by cyclones. Every year there are cyclonic activities. You know, cyclone come to Bay of Bengal. It has a direct impact on Sundarban delta. And, you know, because of not having enough of facility, people migrate from Sundarban. They go to other parts of the country. So that is the two calamities. One is cyclone. Again, why cyclone is getting more intense? Global warming, climate change. And second is sea level rise. These are impacting this area. Sanity and all this one. Now here, Sundarban, one is this one, Tiger Reserve. Now 1973, Project Tiger, when Government of India declared Project Tiger, at that time 9 tiger reserves were added, and out of that 9, one is Sundarban. Other, you know, Jim Corbett and all this were added, Bandipur and all this, but this was there. Now Sundarban, I'll now add again this one, is a World Heritage Site. UNESCO has also declared it a World Heritage Site. You know, Sundarban Delta. That's the national park. Sundarban National Park is a World Heritage Site of natural importance. Okay? That also been added there. Now, we are discussing here about biosphere reserve, part of biosphere reserve. Plus, you have other. Okay. Now, Sundarban, you will find variety of species of plants and animals. इसमें जो एनिमल स्पीसीज में है, यू आर अवेयर ऑफ दिस, आई राइट द नेम्स हियर. फर्स्ट इज दिस वन, रॉयल बंगाल टाइगर. A tiger, a type Indian tiger, Royal Bengal tiger, is a tiger which can swim in sea water. It has the ability to swim in the water, can drink brackish water, hara pani, पी सकता है, and survive in that hostile environment of mangrove forest. एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई, where you know the boy right with the boat with the tiger there, and he is and he knows that this tiger can swim, can attack and eat him, right? That is very interesting movie. That's Life of Pi is based on the book also there. So that Royal Bengal tiger there. So this is a very important one. इसको कई बार man-eater of बोलते हैं, man-eater of Sundarban. Man-eater, you know that, when it attacks human being. Now, what you will find here, tiger is one species, another is this one, crocodile, particularly saltwater crocodile. I have mentioned in the classroom, there is one place where you find saltwater crocodile, Bhitarkanika. Bhitarkanika in Odisha, there is a saltwater crocodile, but we will also find saltwater crocodile in this delta region of Sundarban. Another very important one here, what is you are again aware, this one, Gharial. You know, Gharial is a part of Ganga river, Gangeticus gabelis. See, they are different with Gharial and crocodile. क्या अंतर है? Gharial and मगर में अंतर क्या है? They all comes into crocodilian that family, but what is the basic difference you'll find? पानी के अंदर रहता है. और घड़ियाल के साथ में क्या है? घड़ियाल has a snout. You'll find the mouth part is very narrow, right? Magar or crocodile has a broad jaw is there. And gharial they feed fish. It's called gabialis. Gangeticus gabialis. Gabialis मतलब होता है fish eating crocodile, which eat the fish variety, right? And they have another unique feature. Gharial will find narrow snout and you have a pot. Ghada. The word has come from ghada, has come gharial. Crocodile doesn't have that feature. So gharial वहाँ पर है, and gharial is critically endangered, right? अब इसमें एक फ्रेश वाटर टर्टल का नाम मैंने क्लास में बताया भी था, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन. नॉर्दर्न रिवर टेरापिन. What is terrapin? There's a
टर्टल, टर्टल नॉट टोटोइज, टर्टल। क्या अंतर होता है टर्टल एंड टोटोइज में? अगेन इन हिंदी भी से कछुआ, बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स देयर, टर्टल एंड टोटोइज। क्या अंतर है दो बेसिक अंतर टर्टल टोटोइज में? हाँ, turtles and tortoise both are on land and water, right? But what is the basic thing? Turtles spend most of their life in water. Tortoise spend in land. See, both can go in land and water, but turtles basically live in water. When turtles come to the land for laying egg, right? But tortoise you'll find on the land part also. एक अंतर होता है turtle का, their flap. Turtles can swim. Tortoise have a toes, can walk. अब दोनों लंबा जिंदा रहते हैं. You know life. What is the general average life of a turtle and tortoise? 200 years, 300 years. They can survive there. है ना? और जिंदा रहते हैं दोनों. तो ये टर्टल की बात हो रही है. टेरापिन इज अ टर्टल, नॉट टॉर्टोइज. ठीक है? मेनी स्पीसीज आर देयर. अच्छा, एक इसमें ऐड करता हूं मैं. एक ऐसे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, दे आर रिच फॉर हनी बीज, प्योर वैरायटी ऑफ हनी, एंड दिस हनी इज मेड फ्रॉम मल्टी फ्लोरल, मल्टी फ्लावर्स. इट हैज गॉट वेरी यूनिक नेम ऑफ सुंदरबन हनी. दिस कॉल्ड ब्लड हनी. ब्लड हनी है, बड़ा यूनिक नाम है. क्यों उसको ब्लड हनी बोलते हैं? इसका कलर, यू नो द कलर ऑफ द ब्लड. और दूसरा जो है ब्लड हनी इसे कहा जाता है, वंस इन अ ईयर इट इज ओपन फॉर द लोकल पीपल टू गो इनटू द कोर एरिया where this honey is there, and in the what happen in that process, some of the people get attacked by tiger. That's why the name is blood. It's very very rare case में. अब नहीं जाते उसको, नहीं, अब उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया. मैं बता रहा हूँ कैसे. इसको बोलते हैं बॉन्डफुल भी बोलते हैं, है ना. और वहाँ मौलीज होते हैं. मौलीज, who are the मौलीज आर द हनी कलेक्टर. अब क्या किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? आर्टिफिशियली दे हैव गिवन दिस हनी बॉक्स. नाउ दे आर डूइंग द एपीकल्चर देयर टू जनरेट दैट. और उसमें कई सारे स्पूरियस भी आ गए. इसका बहुत डिमांड है. ब्लड हनी का, सुंदरबन हनी इज वेरी बिग डिमांड. बट उसमें क्या है कि बहुत सारे बाजार में स्पूरियस है. अभी जो हनी हम लोग खाते हैं, हाँ, उसमें अब देखो कभी बार ठंड के टाइम पे तो जम जाते हैं, चीनी मिला देते हैं. इज नॉट अ प्योर हनी. बट हियर व्हेन यू कम ना, अभी इसमें भी मिलावट हो रहा है because of the higher demand of this honey from Sundarban. Now there again different varieties are there in the market. But if you are going to Sundarban and you are buying the pure one, forest department take that and then sell in the market. You'll find that part. So this is Sundarban I have mentioned here. यहाँ बहुत सारे islands भी हैं. People go for tourism there. Now let's go to the next part here. So now I'll come to the, let's go to first here. हाँ, उसको बनाए जाते हैं. उसको उसमें आर्टिफिशियल लेक में दे पुट द सैंड, ग्रेवल, एंड देन दे ट्राई टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द सी. आर्टिफिशियल लेक कैन बी मेड इन द सी साइड और वी कैन मेक नियर द रिवर साइड. तो फॉर लेक, व्हाट इज लेक? सिंपल है समझना है. व्हाट इज लेक? लेक इज अ डिप्रेशन. डिप्रेशन, गड्ढा, which get filled with water. Either the water comes from rainwater or melting of glacier or river flood. तो अगर हमें artificial lake बनाना है, तो what we require first? If we want to create that, first we have to create the depression and then we have to fill with water. Either we bring the water through canal, some nearby river there, or we may recharge it with the rainwater. You know, that kind of, उसमें इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग किया जाता है, सो दैट द वाटर विच परकुलेट दे स्टे इन दैट एरिया देयर. तो उस तरह से क्रिएट किया जाता है, विच ट्राई टू मेक देयर. और ही हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द रीजन इज दैट नाउ द ग्राउंड वाटर इज गेटिंग लॉस्ट. अभी नाउ समर हैज नॉट कम. अभी देखो, समर अभी आया नहीं है, आने वाला है. अभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया वाटर का. एंड यू नो दैट नाउ द रिपोर्ट हैज कम देयर, February being the warmest year compared to last number of years. Again, it's very hot,
At the same time, what is now happening there? Now the water is drying up in Bangalore. अभी आज के कल ही न्यूज में तो गाजियाबाद and this area again the water is getting dried up. Delhi also, you know, Delhi also face water scarcity. तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है artificial lake. We can create artificial lake. Right? Our ancestors used to do that, you know, rain water harvesting. आज भी हम राजस्थान जाते हैं तो पहले राजस्थान में क्या होते थे, उस समय भी ऐसे बनाए जाते थे लेक वगैरह, आर्टिफिशियली बनाते थे. एंड इवन नाउ इफ यू गो टू राजस्थान यू विल फाइंड दोस टाइम ओल्डन टाइम ऑफ लेक्स आर स्टिल विद वाटर. दैट वाज द इंजीनियरिंग ऑफ दैट टाइम. Okay, anyway, now let's go to this one. I'm now going to the upper part here, northern side, 17th one and 16th one. Now 17th one which you come across, so you are aware this 17th one, which place is there? Is a cold desert. Cold desert biosphere reserve. But now clearly see the map here. It is not Ladakh. If you see the boundary here, is a Himachal Pradesh. Although you can include Ladakh, primarily Himachal Pradesh. Now, which is part of Himachal Pradesh? Let me write here. It's called Lahaul and Spiti. There is Spiti Valley also there. Lahaul and Spiti. That's a district. The name of the district is Himachal Pradesh. Lahaul and Spiti district. Where this particular, the cold desert biosphere reserve comes. And then you can connect to the Ladakh. Let me write here certain point here. Then you can connect with the Ladakh side. Leh Ladakh side which goes there. Now here एक नाम ये आता है हेमिस. Hemis National Park, that is part of Ladakh. Second comes here this one, Kibar. Kibar is a wildlife sanctuary. I am writing a short form there, WLS. Kibar Wildlife Sanctuary. ये हिमाचल प्रदेश में. And then comes this one, Spiti Valley. Spiti Valley National Park. That means this biosphere reserve has three important protected areas. One is the Hemis, second comes Kibar, and third comes Spiti Valley National Park. And is again more than 3,000 meters there. इसी जगह पे एक बहुत important lake है, which is the Ramsar site of Himachal Pradesh. It's called Chandratal. Chandra Basin, Chandra River, Chandratal. And in geography, you'll come across. See one river, and this all comes from the glacier. What is Chandra? Chandra Basin is there. Another is called Bhaga. Another river Bhaga. Both meet to form Chandra Bhaga, which later in Jammu and Kashmir called Chenab, which meet the Indus River. So that means the head stream of Chenab then linked to Chandratal. Tal means lake. Is a Ramsar site. Chandratal is one of the Ramsar sites of Himachal Pradesh. और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है मैं लिख देता हूँ, इसी के साथ में जुड़ता है ये चीज जो है. Pir Panchal range, or sometimes called Pir Panjal range. There's a part of the Himalayan range here, whether that landmark comes into that. तो यहाँ अगर कभी भी जाना हो तो यहाँ से वो बाइकर्स जाते हैं, पता है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, वो बहुत पैसे लेते हैं वो मेरे. हाँ, अगर आप कर सकते हो तो वो पूरा ग्रुप ऑफ बाइकर्स जाते हैं, ठीक है. यहाँ से वो जाते हैं चंडीगढ़ होते हुए शिमला, कालका शिमला, फिर वहां से ऊपर जाते कहाँ, कौन सा है, मनाली, फिर मनाली से रोहतांग. रोहतांग टनल इज नियर बाई, एंड फ्रॉम रोहतांग लीड्स टू लद्दाख. इट विल क्रॉस दिस एरिया, cold desert area, and then they return back to Delhi. Right? वो लंबा ट्रैक होता है, ठीक है. कई वैसे बाइकर्स होते हैं. आई थिंक वो कॉस्टली होता है, आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन हाँ वो फन है. इफ यू वांट टू डू दैट, राइट, वो उसे पूरा होता है, पूरा वो ग्रुप जाते हैं. 10-20 bikers are there. They pack up everything and then they go to that area. But it's a very beautiful site. Rohtang, you know, Rohtang tunnel, that's very nearby that area, which cross to that area. तो भी उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है अब उस एरिया को लिंक करने के लिए. तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस यू नो नंदा देवी. Now let me add here, or let me ask the question. Anybody from Uttarakhand here? Nobody is there? Okay. Which districts of Uttarakhand will come to this
Nanda Devi Biosphere Reserve. See, Nanda Devi is again a mountain peak, Himalayan mountain peak. कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है. One is this one, Chamoli. Another one is Pithoragarh. And third is the Bageshwar. Not Bageshwar Baba. Bageshwar धाम नहीं. Right? बागेश्वर धाम अलग है. ये बागेश्वर जगह है, डिस्ट्रिक्ट है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? बागेश्वर. बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, चमोली. These are three districts which come into the part of Nanda Devi Biosphere Reserve. ठीक है. अब मैं इसमें सारे वन बाय वन ऐड किया. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ये 3 जगह आते हैं और अभी आजकल काफी न्यूज में भी है. पिथौरागढ़, यू नो दिस पिथौरागढ़, दिस साइड इज चाइना and this side is Nepal. So Nanda Devi Biosphere Reserve is contiguous with 2 countries. One is the China side and Nepal side. And there is one village called Mana. Mana, last village. Border जो है. तो अभी हाँ, अभी क्या हो रहा है? China has become active this area. Defense and security. You know, China is having the development across the border of India. हाँ, तो वहां पर भी इसका यहाँ पर ही आ रहा है, चाइना पार्ट में. The development there. There is a part of Uttarakhand. और पिथौरागढ़ is that area. You can go to Nepal side. So there are many places by which from India one can go to Nepal by road. Pithoragarh comes. Now Chamoli part, which is a lower part. Now Chamoli is in the news because of another, which you are aware, glacier lake outburst. Right? There was Tapovan Dam burst was there. Tapovan Dam. That dam burst was because of glacier lake outflow. And that's a part of Chamoli. Chamoli area में हुआ था. ठीक है, वहां भी क्या हुआ था? ग्लेशियर लेक फट गया, पूरा वाटर जो फ्लैश फ्लड है, एक तपोवन डैम बन रहा था, पूरा डैम को ही बहा के ले गया वो फ्लैश फ्लड. Many people died in that disaster. So that again, so why I want to tell you all this one? This area is ecologically very, very vulnerable area. Now Nanda Devi. Now what I'm adding here, many times you see in the previous question, one name of national park will come, Valley of Flowers. So Valley of Flowers National Park is a very important national park as a part of Nanda Devi Biosphere Reserve, which is known for Himalayan varieties of plants. है ना, यहाँ पर जो होते हैं जैसे कि rhododendrons, ओक, वो देवदार वगैरह सब ऐसे पेड़ होते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, known for Himalayan flowers, right? Now Himalayan flowers and this Valley of Flowers has been declared as a World Heritage Site. ये जो Valley of Flowers है, इसको World Heritage Site में डिक्लेयर किया गया, World Heritage Site of Natural Importance. I'll again repeat that. Nanda Devi has a very important park. What is the name of the park? Valley of Flowers, and that is declared as a World Heritage Site. ठीक है, तो ऐसे ऐड करना है वहां पर. So these are the points which you have to keep in mind there. It is declared a World Heritage Site there. That part comes here. Himalayan range में आता है वहां पर. ठीक है. So then you will not forget. और if you go back and see the question paper, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था यूपीएससी में, which is known for alpine meadow. Alpine meadow. What do you mean by meadow? What do you mean by the word meadow? Alpine means mountainous, high area. Meadow means grassland. है ना, पास जो है. अब मैंने एक नाम बताया था क्लास में, बताओ. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? जब मैं शोला वगैरह बता रहा था, बुगियाल वगैरह जो एरिया था, ग्रासलैंड वगैरह जो होता. तो दैट इज वेयर द नंदा देवी कम्स. ठीक है. तो दिस वे यू हैव टू गो इनटू ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग हियर. नाउ लेट्स कम टू द दिस पार्ट ऑफ इट. तो अगर हम नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, ये पार्ट सेक्शन हो गया. नाउ लेट्स लुक एट एमपी को पहले फोकस करते हैं. यहाँ बहुत एमपी वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए, मध्य प्रदेश के जो है. ठीक है. तो लेट मी आस्क द बॉय फ्रॉम ग्वालियर. ग्वालियर से पहले पूछा है. हाँ? क्या आपका नाम क्या है? मुझे नाम बताओ. संदीप नाम है. तो संदीप पहले बताएगा.
उसके बाकी एमपी वालों से पूछूंगा मैं, एक एक करके सबकी बारी आएगी, ठीक है। कौन कौन एमपी वाले आ जाइए। इनको तो मैं पता है ग्वालियर है, यू आर देयर, ओके, डोंट वरी, आई लास्ट सिंपल क्वेश्चन देयर, राइट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ओके। नाउ लेट मी टेल, so I'll simple, Sandeep will give the answer. Why I'm asking Sandeep? Because Sandeep lives nearby this area. 15th. नाम क्या है 15th? पन्ना. That is it. He lives nearby there. तो 15 is पन्ना. अभी मैं ऐड करूंगा कहां पर, करंट अफेयर्स में भी है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया, what I said, पन्ना has been added to world network of biosphere reserve. ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। इसके पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? छतरपुर। गुड, वेरी गुड, छतरपुर इज देयर। ऐसा क्यों बोलते हैं, छतरपुर क्यों बोलते हैं? हाँ, छतरपुर क्यों नाम है? हाँ, छतरपुर क्यों नाम है? छतरपुर क्यों बोलते हैं? कुछ है इसमें कुछ? हाँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वहां पर जो ना छतरी जो बोलते हैं, छत्रसाल भी कहीं बोलते हैं ना, किंग जो है, कौन सा किंग है, कौन सा इधर कौन सा किंगडम हुआ करते थे? हाँ तो सर छत्तीसगढ़ में नहीं, वो कौन सा बोलते हैं, बुंदेला, बुंदेलखंड है ना, पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेला रूलर्स। तो मैं तो हिस्टोरिकल पार्ट को जोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, झांसी में, ठीक है, झांसी में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हाँ somebody given this, ओरछा। सी झांसी इज यूपी, झांसी इज यूपी, एंड जस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा यू आर इन द एमपी, जस्ट 8-10 किलोमीटर्स। ओरछा, ओरछा देयर इज अ पार्ट ऑफ देयर, एंड ओरछा जो है, कौन सा नदी है वहां पर, विच रिवर इज देयर? इफ यू बीन, कितने लोग गए ओरछा? देयर इज वन रिवर देयर, कोई ना छत्र बोले, छत्र, बहुत सा छतरी बना हुआ है। ओरछा इज नॉट टू बेतवा रिवर। अभी मैं क्यों पूछा, आई एम कनेक्टिंग दैट वन, बेतवा रिवर। तो नाउ आई विल कम टू, व्हेन यू गो फ्रॉम झांसी टुवर्ड्स पन्ना, Chhatarpur. So you'll come across two rivers. One is from Jhansi, there's a river called Betwa flows there. Another river comes Ken. So this Panna is very important for this exam because the two rivers, Ken and Betwa, right? Betwa river ऊपर है, Ken नीचे है. And now you know, earlier the matter went to the National Green Tribunal, NGT, but now it has been approved. So what is being done? Interlinking of rivers, interlinking of Ken and Betwa rivers. Now what is the one of the big problem with Ken Betwa river linking project? That part of area will get submerged, flooded with water. तो इसीलिए वहां पर क्वेश्चन मार्क राइज किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व, राइट, पार्ट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व विल बी सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अभी उसका क्या किया गया, EIA, यू नो, EIA स्टडी। तो वहां पर उन्होंने कुछ किया है कि वहां पानी नहीं भरेगा, तब जाके एनजीटी ने अप्रूवल दिया है। Are you getting my point? When the initial report was submitted, so there was a risk of Panna Tiger Reserve getting affected. So the government was, the matter went to the court, NGT मना कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया प्रोजेक्ट। अभी फिर से उन्होंने रीडिजाइन किया प्रोजेक्ट को फॉर केन एंड बेतवा रिवर। अब मैंने इसे क्यों पूछा, बुंदेलखंड, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट बुंदेलखंड हैज गॉट? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। आपको पता है बुंदेलखंड में पानी है ना, पानी की कमी है ना। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दिस केन बेतवा विल बेनिफिट द बुंदेल रीजन इन टर्म्स ऑफ वाटर, इरिगेशन होता है ना, इरिगेशन होगा ना, अपलिफ्ट कनाल विल बी देयर, दैट पार्ट विल कम। नाउ इफ यू गो टू इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, टाइगर ना। अच्छा ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड पन्ना? पन्ना नाम क्यों दिया है? यस, वेरी गुड, हीरा पन्ना है ना, पन्ना डायमंड। अभी माइनिंग होती है या बंद हो गया? डायमंड माइनिंग होती है वहां पर, कुछ जगह पे डायमंड माइनिंग इज देयर, पन्ना डायमंड्स है ना वहां पर जो है, इसे नाम पड़ा पन्ना। और कौन सा हिस्टोरिकल साइट वहां पास में है, वर्ल्ड साइट, मैंने बताया था क्लास में, खजुराहो, ठीक है। और एक चीज और बताया था, यही एरिया आगे जाके लिंक करता है राजस्थान साइड में, कुनो, कुनो पालपुर, एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ दिस चंबल साइड, चंबल एरिया। तो देखो कितने सारे डॉट्स जुड़ गए पन्ना के साथ में, है ना। तो पन्ना के साथ में यहाँ पर आ गया, यहाँ पार्ट है। अब यहाँ पर मैं मैडम से पूछता हूँ, व्हाट्स योर नेम?
Richa will tell me. 14th one. It was simple question there. 14th. I've already told in the classroom. Yes, Richa. Which place is that? 14th number. You can see the two states are there. हाँ, जबलपुर के पास दो स्टेट है ना. ये क्या कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़. And which is this state? MP. So which is this area? Amarkantak. Achanakmar, Amarkantak. Achanakmar is Chhattisgarh. Is a tiger reserve. Amarkantak is the MP side. Remember that Achanakmar comes into this area, which is towards Chhattisgarh side. And Achanakmar is a tiger reserve. हाँ, Achanakmar. Right. There is sudden attack. It's a tiger, you know. इसलिए वहां के लोगों ने दिया tiger. Sudden attack जो है. And Amarkantak is this side. Now, if you look at this Amarkantak, now tell me which are the river which starts from Amarkantak. First, let's come to river. There are two rivers which goes here. Gulf of Khambat. उसमें से एक है नर्मदा. Right? The two rivers which flow to Arabian Sea. Where? Gulf of Khambat में है. तो ये जो यहाँ पे जो फ्लो करता है नर्मदा. Yes, very good. The person given. Narmada flows through Rift Valley. You have a wall, Rift Valley. Within that, Narmada river flows. अगर आप मूवी देखते हो तो रिसेंटली एक मूवी में दिखाया गया था. शाहरुख खान है, तापसी पन्नू है, विक्की कौशल भी है ना, बोमन ईरानी है. डंकी में दिखाया गया है. जब वो डिसाइड करते हैं ना डंकी करना है, आप देख रहे हैं एक नदी में वो क्रॉस करता है और वहां पर उनपे फायरिंग करते हैं तो वो नदी के नीचे चला जाता है ना. एंड वो पाइप लेके दे वॉक अंडर द वाटर. तो दैट लैंडस्केप, इफ यू सी दैट सीन, दैट रिवर इज नर्मदा. आपको साफ दिखेगा. यू हैव दिस काइंड ऑफ क्लिफ बोथ द साइड्स एंड द रिवर फ्लोज थ्रू दैट. राइट. एंड यू नो सरदार प्रोजेक्ट, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व्हिच कम्स इन द पार्ट ऑफ गुजरात देयर. नाउ अनदर थिंग व्हिच इज अनदर रिवर, वन इज नर्मदा. व्हिच अनदर रिवर? तापी. तापी एंड नर्मदा. एक और नदी है विच इज नॉट दिस साइड, इट गोज दिस साइड. बिहार, बिहार की तरफ जाता है वो. सोन रिवर जाता है बिहार. सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. वहां पे वो. तो यहां पर आप यू विल स्टडी इन इंडियन ज्योग्राफी ड्रेनेज पैटर्न. तो व्हाट ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज दिस? थ्री रिवर, रेडियल इज अ प्लेट्यू. सी अमरकंड इज प्लेट्यू. थ्री रिवर्स आर कमिंग अप, रेडियल. It's called radial drainage system. It's given in Indian geography NCERT. Now tell me, last year the question पूछा गया था, which are two mountain range which meet at this Amarkantak? जो अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया. Which are two mountain range which comes here? तो one is मैकाल and one more is there, महादेव. और कौन सा माउंटेन रेंज के साथ में है? विंध्या एंड सतपुड़ा. वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट. मैकाल अगर आप मैप में देखोगे एटलस में, एंड महादेव, महादेव मैकाल दो रेंज है. एंड अगर जो माउंटेन रेंज की बात करें तो विंध्या एंड सतपुड़ा. एंड यू कैन सी आई एम क्रॉसिंग सतपुड़ा हियर. विच इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व? सतपुड़ा इज हियर. व्हाट इज दिस रेंज कॉल्ड एज? सतपुड़ा. ये कौन सा जगह है? पंचमढ़ी. तो पंचमढ़ी किसके पार्ट में आता है? सतपुड़ा रेंज. राइट. सतपुड़ा रेंज का पार्ट ऑफ द पंचमढ़ी आता है. Who is another MP person? टीचर का टाइम हो गया हो. Who is another MP? You are there? अच्छा ठीक है. सतपुड़ा के बारे में बताऊं. Tell me about सतपुड़ा. अच्छा ठीक है. Anybody? हाँ, पचमढ़ी गए? संदीप, रिचा, लोग जाते हैं घूमने के लिए पचमढ़ी में? ओके, मैं पहुंचाता हूँ, बताता हूँ. सतपुड़ा जो है उसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़. Let me write. धूपगढ़. Dhupgarh is the highest peak of Satpura. Is a hill, Satpura hill, and it is known for dense forest. What type of forest will be there? Deciduous, temperate forest, and is known for one very important tribe, Gond. You know, Gondwana, Gond tribe is how they live in that area. Satpura is also tiger reserve. Satpura is also tiger reserve. So, and which biosphere reserve we are talking about? Panchmadi. अच्छा ठीक है. Now we'll ask him. He's from MP. मड़ी means what? मड़ी का मतलब क्या होता है? हाँ? 10, okay. Jewel, okay.
ओके, लेट मी ब्रिंग हियर. इससे याद रहेगा आपको. पंच मीन्स 5, मड़ी मीन्स caves, गुफा. There are 5 caves are there. 5 गुफाएं हैं वहां पर, and they are called Pandavas caves. है ना. पंचमढ़ी का नाम जो है लिंक विद महाभारता. Now according to the mythology, what is the part here? They have to stay for 1 year Agyatwas. So these are the 5 caves. That's why the name has got पंचमढ़ी. मैं अगर नेम का ओरिजिन बता रहा हूं, उसको नाम क्यों पंचमढ़ी बोलते हैं. इसका लेकिन माउंटेनियस रीजन कौन है? सतपुड़ा का है. इज अ टाइगर रिजर्व, राइट. ऑल दिस पार्ट कम्स इनटू दैट. So that is where the third biosphere reserve of MP comes. ठीक है. तो जिसने अब आपको इसमें चिंता नहीं करना है ना. विंध्या, सतपुड़ा एंड ऑल हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, बट अदर पार्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. नाउ लेट मी गो टू, सो दिस वी हैव डन दिस वन. लेट अस गो टू दिस 7th नंबर. व्हाट इज 7th नंबर? उड़ीसा में सिमलीपाल. ठीक है. इसमें एक पार्ट में इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड करता हूं. सिमलीपाल, विच डिस्ट्रिक्ट इज देयर? दिस वन, मयूरभंज. Mayurbhanj in Odisha, this is district name, and I have told you that is a tiger reserve. Simlipal is a tiger reserve, elephant also there. Now, what is very important about Simlipal is known for this one. Simul tree. इसलिए नाम पड़ा है Simlipal. Cotton tree. Why the place has got the name Simlipal? Because of Simul. Simul is the Odia language which refer to cotton tree. उसी से इसका नाम पड़ा है Simlipal, right? That is the Mayurbhanj district of Odisha that comes. Now coming to this one, right? Have you written this cotton tree Simul? Where the name has been gone. Tiger and elephant is there. Now let's go to this one, last part. I'll come to that one. What is the 8th one? You are aware of it. Sheshachalam. Andhra Pradesh, AP. Right? Again, you know, last year there was a name there. AP part of Eastern Ghat. And that is near to Tirumala and all this region. Now this part you are very important, you know. 3 states comes here. Nilgiri. And Nilgiri was the first biosphere reserve of India. So Nilgiri comes here. Blue Mountain. Now it was also in news last year. Why it was in news last year? Nilgiri Biosphere Reserve. Why it is called Blue Mountain? Why it is called Blue Mountain? There is one type of flowering plant called नीला करंजी. 12 साल में एक बार वो ब्लॉसम करता है. क्या था लास्ट ईयर में? After 12 years, this entire mountain get filled with this नीला करंजी, and that was the last year. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक ट्राइब का नाम लिखता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब. टोडा is a home of Toda tribe, Nilgiri. Now there are settled tribe are there, Toda tribe. और वहां पे क्या है? Toda tribe count their age every 12 years when the entire mountain become blue in color. है ना. वहां पे उसके नाम पे आते हैं. yes. वहां भी है, इसमें भी है, दोनों जगह पे. बड़ी से फुटेल्स में, बट वहां भी है. सिमलीपाल में भी वहां पाया जाता है. वहां भी है, आपको हिमालय में मिलेगा. नाउ विच ऑल स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला. देयर पार्ट कम्स. व्हाट इज 10th हियर? 10th वर यू आर अवेयर. यू कैन सी द इज अगस्त्य माला. अगस्त्य माला और अगस्त्य मलाई. नाउ हियर यू कैन राइट 4 नेम्स. इसमें 4 नाम लिख लो. अगस्त्य माला you can write in bracket there. I'm writing the name of the sanctuaries and national park. One is this one, Shendurni National Park is there. Then there is the Pepara Wildlife Sanctuary. Then third one is called Nayyar Wildlife Sanctuary. Now all these three, Shendurni, Pepara and Nayyar, all three are the part of Kerala side. And towards Tamil Nadu side, there is a tiger reserve called Kalakad Mundanthurai. Now this is tiger reserve. I repeat there. Agastya Mala Biosphere Reserve has got 4 protected areas. 3 are in Kerala, 1 is in Tamil Nadu. 3 names is Shendurni, Pepara and Nayyar Wildlife Sanctuary.
whereas Kalakkad Mundanturai is Tiger Reserve is a part of Tamil Nadu. Now, district, if you look at Kerala side, this one, I'll write the name here. Kerala side, you have two districts. One is the capital city of Kerala. So, what is capital city of Kerala? Thiruvananthapuram. So, Thiruvananthapuram, which is very down south here. And just northern side of Thiruvananthapuram, there is a very important district called Kollam. In Kerala, capital city Thiruvananthapuram, and above you have a Kollam. So this becomes the part of Agasthamala. Now the Tamil Nadu side, when you take the Tamil Nadu side, see from Thiruvananthapuram, you can have road ride of 2.5 hours, you can reach Kanyakumari. So here is the Kanyakumari, Cape Comorin. You know Cape Comorin, Kanyakumari. So Kanyakumari, so Tamil Nadu side की अगर बात करें, तो you have a Kanyakumari, that is one district of Tamil Nadu, Kanyakumari, and another district is the Tirunal Valley. Tirunal Valley. I can repeat there. Kollam and Thiruvananthapuram districts of Kerala that form the part of Agasthamala, and Tirunal Valley and Kanyakumari districts of Tamil Nadu part. They become the part of it. And very important part is a part of Western Ghat. Remember that Agasthamala becomes a part of Western Ghat landscape. Okay? Now, another side of the Tamil Nadu, you are aware of this, which link with India and Sri Lanka, which is a very famous site, you are aware, Gulf of Mannar. Gulf of Mannar, that is Palk Strait, known for dugong, turtles, mangroves, coral reefs. So Gulf of Mannar comes into that. ठीक है, उस साइड में जाएंगे निकोबार में ग्रेट निकोबार आएगा, और एक जो गुजरात में है कच्छ, रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है ना, और ग्रेट निकोबार अभी जो मैंने बताया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार इज द सदर मोस्ट आइलैंड देयर. तो इस तरह से एक बार आपको करना है, यू हैव टू वंस गो थ्रू ऑल सच एरियाज देयर जो या मैप में दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट में जो है. एटलीस्ट यू आर अवेयर कि दीज आर नेम्स. अगर कोई भी ऐसा नाम आ जाए तो एटलीस्ट आपको ज्योग्राफिकल लैंडस्केप पता होगा कि वेयर दे आर फाउंड देयर, है ना. दिस पार्ट यू विल बी अवेयर ऑफ इट. मंडे को एक कंपैरिजन आपको मिलेगा. विल बी हैविंग अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस 18 साइट्स, एंड दिस इज स्पेशली फॉर दिस बैच, राइट राइट. आपको अलग से अभी मैंने मैपिंग के थ्रू आइडिया दिया है कि हाउ टू गो, बट यू विल गेट द कंपैरिजन. ऑलराइट. हाँ, टाइम हो गया है. मुझे अभी और पता है, मुझे लगा कि टाइम नहीं, अभी और पढ़ाना है मुझे. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम ऐसा करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैं एक बार जस्ट एक रिव्यू कर लेते, ठीक है. यहाँ तक जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स देयर. व्हाट आई हैव गिवन फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है. मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. उसके बाद जो है नेक्स्ट है नेशनल पार्क है. मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है. तब इससे बहुत मजा आएगा क्लास में. ऑन मंडे व्हेन यू डू दिस वी ऑल विल एंजॉय द क्लास. क्या करना है, ये जो नेशनल पार्क है एक बार उसको गूगल सर्च करना है. हाँ, अब करके देखो आप, खाली रीड करना है. मतलब आप ऐसे करना कि जैसे जो भी आपको लगता है, ग्रेट हिमालय, इंद्र किला, अगर आप कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम, केवल एक ही एक्सरसाइज करना है, ओनली नेशनल पार्क को लेके सर्च करना है कि व्हाट आर थिंग्स यू गेट टू नो. देन नेक्स्ट आई हैव गिवन प्रोजेक्ट टाइगर. आई विल डिस्कस इन द क्लासरूम. ऑन मंडे आई विल बी गोइंग टू प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर रिजर्व. देन आफ्टर दैट यू हैव अ elephant, and on Monday I will discuss Mike. Can anyone tell me what is Mike? MIKE? Monitoring of illegal killing of elephants. Mike site. The elephant again becomes very important. We will be covering there. Then I have given Ramsar site, wetlands. We'll go into the wetlands part of it. Then I have given after that zoo, zoological parks. That you can give it. Now go through it. Bioregion of UNESCO. This is what, see, remember. Bioregion of UNESCO, just briefly let me make you understand. That is a World Heritage Site. अभी जो मैंने बताया ना, काजीरंगा, सुंदरबन, right? All these are World Heritage Site. Kanchenjunga. So Kaziranga is also World Heritage Site. You can see Kaziranga, Manas. Then Kanchenjunga, Sundarban, Nanda Devi Valley of Flowers, Great Himalayan National Park, and then Keoladev. Where is Keoladev? Bharatpur, Rajasthan, and Western Ghats. These are World Heritage Sites. And Kanchenjunga, I told you, cultural and natural both are there. Now, next page when you go to this is a biogeographic region. 10 biogeographic regions are there. Trans Himalaya, Himalaya,
desert, semi-arid, Western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic Plain. Then I've given Northeast India, coastal area, islands. We will cover that one. And last I've given mangrove forest of India. Okay? So at least this exercise what I try to cover in the classroom will continue in the next class also. Okay? Any doubt you have? Clear? I don't know online people, whatever doubts are there, I cannot see your chat box. But I hope that whatever exercise we have done there, it really helps you in the preparation part. So rest of the students will have their continuing part in the next class there. Right? Okay. So thank you everyone. We'll meet on Monday. Thank you. Any doubt is there? No doubt?